await the welcome address by the President of Academy of Hospital Administration, India, Dr. Yashpal Sharma. A few words about sir, with your permission, sir. Dr. Yashpal Sharma, President of AHA India, is a postgraduate in hospital administration from AIIMS, New Delhi, with more than 30 years professional experience in medical operations, hospital supplies and procurements, health and hospital administration, program management, and establishment of medical and nursing colleges. He has held several senior positions within the government of Jammu and Kashmir, including Mission Director, NHM, and Medical Superintendent, Medical College and Hospital, Jammu. He's been elected consecutively for second time as the President of Academy of Hospital Administration. Dr. Sharma has authored several books on hospital administration and has organized 24 management development programs for healthcare professionals in J&K. He is presently the Director Coordination for new medical colleges and nursing colleges in J&K government. Dr. Sharma, please. Thank you, Dr. Sureka. Respected Dr. Vinod K. Paul, Member Health, Niti Aayog, Lieutenant General Daljit Singh, AVSM, VSM, PHS, Director General Armed Forces, Medical Services, Dr. Girdhar Gyani, Director General, Association of Healthcare Providers in India, Major General Atul Kotwal, Executive Director, National Health System Resource Center, Dr. Jitendra Sharma, Managing Director and CEO, AMTZ, other dignitaries of the dais, esteemed AHA BOE office bearers, members, panelists, speakers, moderators, delegates, ladies and gentlemen. A warm and heartfelt welcome to each distinguished guest at Constitution Club of India for the conference Safe and Sustainable Hospitals, popularly known as SASH, which is annual signature event of AHA India. We are truly honored to have Dr. Vinod K. Paul with us today. Dr. Vinod Paul, as you all know, is an esteemed Indian pediatrician and physician scientist, presently holds the esteemed position of member at Niti Aayog. Prior to this role, he dedicated his expertise as a professor in neonatology in the Department of Pediatrics at AIIMS, New Delhi. His invaluable contribution extends to shaping India's health policies and spearheading initiatives focused on child and maternal health. Notably, in August 2017, Dr. Paul assumed the pivotal role of member Niti Aayog, taking charge of health and nutrition portfolio. His significant involvement encompasses the formulation of crucial programs such as Poshan Abhiyan and Ayushman Bharat Yojana. From 2018 and 2000, he led as chairman of Board of Governors of National Medical Council of India, and he also serves as a chairman of National Expert Group on Vaccination Administration in COVID, besides having many other feathers to his cap. As you all know, SASH 2023 is not just confluence of minds, it is a shared commitment to advancing the cause of safe and sustainable healthcare facilities in our nation. Dr. Vinod Paul's and other dignitaries' presence underscores the significance of our discussions and collective responsibility we bear in the shaping the future of healthcare administration. At the heart of our deliberations is the crucial recognition of need for qualified hospital administrators to efficiently manage complex healthcare organizations. It emphasizes assigning the responsibilities of management of healthcare institutions only to the individuals holding the requisite postgraduate qualification in the subject. It is crucial for the National Medical Commission to acknowledge the necessity of establishing Department of Hospital Administration
in each medical college across country. This acknowledgement will address growing demand for specialized healthcare management professionals, ensuring production of skilled hospital administrators capable of steering our healthcare institutions towards safety, sustainability, and efficiency. The agenda of our conference is meticulously crafted to focus on various aspects crucial to realization of safe and sustainable hospitals. We will dwell into the topics such as resilient organization, strategies and leadership, building, planning and designing, technology integration, operations and quality management, digital health, and incorporation of artificial intelligence in healthcare. Our esteemed speakers, experts in their respective fields, will share valuable insights and experiences, fostering a rich exchange of ideas. Through these discussions, we aim to pave the way for innovative solutions and strategic approaches that will shape the future landscape of our healthcare infrastructure. As we embark on this journey, we anticipate lively debates, thoughtful discussions, and the formulation of actionable strategies. Your participation is not just appreciated, it is indispensable to the success of our collective mission. Once again, I extend my heartfelt welcome to each one of you. Let's embrace this opportunity to contribute to the discourse on safe and sustainable hospitals, a cause that transcends boundaries and hold the key to healthier and more resilient future of our nation. My heartfelt gratitude to all the dignitaries on the dais, of the dais. Your presence has added immense value to the SASH 2023, for which I am deeply indebted. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. I now invite our co-host, Dr. Jitendra Sharma, MD and CEO of AMTZ, to deliver his address. A few words about him. Dr. Jitendra Sharma is the MD and founder CEO of Andhra Pradesh MedTech Zone, which is Asia's first medical devices manufacturing park. He is founder, executive director of Kalam Institute of Health Technology, which serves as MedTech Policy Institute to various government departments and ministries. He is member secretary of National Medical Devices Promotional Council and founder chairman of two MedTech incubators, MediValley and BioValley. He is chairman, Indian Biomedical Skill Council, and a distinguished senior fellow at Niti Aayog, the National Policy Making Institute of the Government of India. Dr. Sharma has been awarded the European Union India Young Leader Award, and he is also known in professional circles as the MedTech Man of India. Welcome, sir. Good evening and namaste to everyone, dear family members of hospital administration community. Our teacher and guide, Dr. Vinod Paul, member Health Niti Aayog, Lieutenant General Daljit ji, our quality champion, Mr. Girdhar Gyani ji, Dr. Girdhar Gyani ji, the man who led quality movement in healthcare, my senior colleague, Mr. Atul Kotwal, Dr. Shyama, Dr. Yashpal, and so many other dignitaries, particularly Major General Pawan Kapoor. But let me also take this moment to remember the founders of Academy of Hospital Administration. Perhaps a time when we were kids, General S.K. Biswas, who is sitting with us, the man who actually created Academy of Hospital Administration. Sir, thank you for blessing this gathering. Everybody here is great but is younger than you. And we say that we look into the future standing on the shoulders of great men.
you are one of those great men administration has produced. Let me also remember somebody who is not with us anymore, late Dr. Amarnath Safaya, Dr. A.N. Safaya, the erstwhile medical superintendent of AIMS. Today when I was coming to this venue, I saw an ambulance parked at Ashoka Hotel. It was written CATS, C-A-T-S. Delhi Ambulance Service has always been known as CATS. And CATS ambulance was the first ambulance service designed in India by Dr. Safaya. It was called Centralized Accident and Trauma Services. He designed it sitting in his room in evening at 8 o'clock. He himself has told this story to me because he was my guru and professional mentor. He is no more, but he is one of the founders of Academy of Hospital Administration. So with our due regards to these two great men, because of whom Academy exists as a family, as one of the largest professional body of hospital administrators. Let me share here that healthcare has got commodified. We can always look at it at a negative way, but we can always look at it as a positive way. Because healthcare also is a great adder, a great contributor to India's GDP. Whether it is pharmaceutical industry, worth 4 lakh crore, whether it is medical devices industry, worth 90,000 crore, whether it is income tax paid by the people who earn their livelihood from healthcare profession, by the goods and services that hospitals consume, hospital is one of the leading contributors of economy. And that is only possible because healthcare can be commodified as much as it can be serviced. Perhaps healthcare is one of those few sectors that is actually also as a good sector as much as it is a service sector. Because the end product is service, but everything that goes into the value chain of healthcare is a commodity. Why are we co-hosting this along with Academy? It's simple. If you commodify healthcare into 4 parts, part 1, and we all are hospital administrators from healthcare fraternity here, part 1 is land and building. This will always remain in the realms of real estate sector. What is the cost of land? What is the value of building? Depends upon value of cement, circle rates of land, steel, glass, and so on, which is not the domain of healthcare. The second component is the cost of human resources. All of us would like people to get paid better than what they were paid yesterday. Which means while we can reduce the number of units of human resources, optimize it if not reduce it, the cost per unit, which is cost per month of salary of a nurse or a doctor or a ward boy or anything, can never come down. Which means this is a cost which will never be also in our control. The third part is the pharmaceuticals and vaccines and biologics. India is a global leader. We all know that India is called the pharmacy of the world. We all know that one of the cheapest good quality drugs in the world market is Indian. We all know that every 5th medical pharmaceutical product sold in the world market is Indian. That is where India has actually showcased its championship in low-cost, good quality production. But the fourth part is tricky, medical equipment. India has been a net importer of medical equipment for ages. Even today, India's import of medical equipment is 63,000 crore per annum. Reason being simple, unlike pharmaceuticals, which has 2 or 3 chemical entities, medical equipment could have hundreds of components. A CT scan has about 4,000 components. A dialysis machine has about 760 components. A simple ECG machine has 212 components. These components require the value engineering services to be there as backward integration for India to produce. That is where AMTZ came up. It came up in a record time of 342 days. It is today, yesterday we celebrated 5 years of AMTZ. Today we actually start 6th year. It started with 10,001 rupees in 2018.
Today we are a 9,500 crore cluster. It is the world's largest medical technology park. It is a home to 137 companies, and it is the only cluster in the world where we produce right from a mask to an MRI machine. A 1.5 Tesla MRI machine which we used to import for 6 crore, today we export at 2 crore 80 lakhs. A pacemaker which we used to import for 7 lakhs, we export at 1.5 lakhs. Dr. Vinod Paul, who was there in the inauguration of AMTZ, and if you have read the book Made in Lockdown, available on Amazon, the book ends with a sentence which was mentioned by Dr. Vinod Paul at the inaugural ceremony of AMTZ. Something very historic. He had said, if the history of medical equipment in India be written, if the history of medical equipment in India be written, it will always be mentioned before AMTZ and after AMTZ. That is a sentence he had spoken, which is how the book Made in Lockdown ends. Now, when we commodify health, and we all know that our joint responsibility is to create large number of medical human resources, large amount of infrastructure, much larger number of beds, good quality patient care. If we were to capture the fourth demon, which is medical equipment, what do we do as a hospital fraternity? One, we must adopt made in India medical products. In fact, now we are setting up 6 hospitals across the country and few in places like Bangladesh, Indonesia, Western Australia, which are called made in India hospitals. These are the first hospitals ever built to be using only made in India medical equipment, because we make everything. But we all know that medical equipment costs a lot. An entire drugstore in a hospital of a 400-bed, 300-bed hospital may have a drug value of say 50 lakhs to 1 crore. That's all. But a hospital of 300 beds can easily have 50 to 60 crore, 80 crore worth of medical equipment. This cost is so prohibitive that hospitals that come up go to banks and they take loans, or charitable hospitals which have the mandate to give good quality medical care, like Amrita Institute led by our friend Dr. Sanjeev, or Satya Sai Institute in Puttaparthi, or Ramakrishna Mission Hospital. These hospitals depend on well-meaning donations to actually fund the good quality medical equipment. And therefore, and this is where I would end, last month we had the first WHO Global Summit on Health Innovations at AMTZ, which was attended by people from 90 countries. We have created a unique program called Health Infrastructure Transformation Program to reduce the capital burden of medical equipment on hospitals, both new and old hospitals. As part of the WHO Global Forum, we have announced that we would fund free of cost any hospital that is above 25 beds or puts an order of made in India medical equipment for more than 25 beds at zero capital cost at 1,000 rupees per bed per day, completely eliminating the capital burden on hospitals. A hospital, average hospital in a tier 2 city, the profitability is around 2,500 to 4,000 rupees per bed per day. And large hospitals in large cities earn anywhere between 7,000 rupees to 15,000 rupees per bed per day. They can actually pay for world-class medical equipment from their profit without going to bank to take debt of 100 crore for medical equipment. And this facility is available to all of you, to the hospital administration fraternity, as a joint partnership of AMTZ and Academy of Hospital Administration. The point I am trying to make, it is in our hands to make India a world leader in medical technology. And with the support of all of you, with the visionary leadership that we have, with the guidance of veterans like Dr. Vinod Paul, with the work done by people like Dr. Pawan Kapoor and Dr. Girdhar Gyani, this is the time we can make a difference, and this is the day when we can decide to do it. Thank you and Jai Hind.
Thank you so much, sir. Our next speaker, Major General Dr. Atul Kotwal, Sena Medal, Vishesh Seva Medal, is the Executive Director of National Health System Resource Center under Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. He did his MBBS and MD PSM from AFMC in 1984 and 91 respectively. He has a postdoctoral fellowship in epidemiology from AIMS and JNU, as well as a WHO fellowship. For his devotion and dedication to service in the armed forces, he has been awarded Sena Medal Gallantry and VSM by the President of India. Okay. So for this, sir says that you all heard his biodata as a panelist a little bit ago, and the guest of honor knows him very well. So I've been told to cut short my introduction. I have your permission, sir? Yes. Thank you. So big round of applause for General Kotwal, please. Thank you. Respected Honorable Member Health, Niti Aayog, Dr. V.K. Paul, sir. Lieutenant General Daljit Singh, AVSM, VSM, PHS, DGFMS, Dr. Girdhar Gyani, DG HPI, the President of the AHA, Dr. Yashpal Sharma, Dr. Jitendra Sharma, whom we heard very passionately talking about, and I think we'll have a discussion subsequently how we can leverage your efforts into the government public health system also. Why should that be devoid, from whatever you are doing? Dr. Shyama, all the dignitaries of the audience. I always try to save time, and that's why I thought why repeat my introduction again. But few names, I think, dignitaries of the audience: General Biswas sir, Air Marshal Pawan Kapoor sir, General Jakhtar sir, General Garg sir, and also all the other doyens sitting here. The experts, the panelists, the speakers, and the participants, and ladies and gentlemen. It's a matter of honor to be amongst you all and amongst the luminaries in the hall. And also, I would repeat what I said earlier. I must, congratulate the organizers to look at this conference not only from the prism of the hospital administrators as such, but to look at the entire health systems, to go beyond the hospital so that the last man standing in the line in the remotest part of the country is benefited by the efforts of the AHA and all the administrators or the experts who are part of the AHA and otherwise also who are working in this field as such. I've seen the program, very well curated, and if you read the program from my perspective as such, it covers the entire health system. Each session, one session talks about the governance and resilience, and where we talk about resilience, which talks about governance and administration. There's another session on the human resources, another on technology. So all the building blocks, and there's a session on community also in this, in the program. So it was really pleasant surprise to see the program of hospital administration looking at this, and that's I think the need of the hour, because we all need to work together to strengthen our health system further, to make it resilient and strong as such. The majority of the participants, as I mentioned, are from that, but I think it's time you all start looking outside the hospital. The leadership and governance, the current dynamic leadership and governance which our country has, and I'm not saying because I am working in the NHSRC as such, as a technical body of the Ministry of Health, I have the independence of thought and independence of giving our opinion as such of my entire organization. But when we look at the statistics which I shared earlier of how the government expenditure on health is increasing since 2013-14, how the out-of-pocket expenditure is reducing since then, and that's reducing the burden on the common man. I'll just give you one figure of this thing. In 1920, the actual budget on health was 643 billions. In 23-24, budget estimates 1030 billions. 400 difference within 3 years as such. And that's the commitment which the government has, and this includes the additional funds which I mentioned earlier of PM Abhim and 15 Finance Commission. Also along with this, with the whole of government and whole of society approach, and also looking at addressing the managerial aspects of the planners and also the implementers, and strengthening them also to run the system, manage the system, and how to look at innovations also while doing it. These are the activities which are taking place.
comprehensive and visionary approach as such, as I mentioned earlier also, of National Policy 2017. From 14 onwards it started, and that's what the first time when I received the invitation to be member of that committee was in November 2015, and from December we started having meetings of national policy, which was finally released in 2017. So that's the kind of, the visionary approach which was there. And the 4 pillars of Ayushman Bharat, the AB HWC, the AB Ayushman Arogya Mandir now, PMJ, Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission coupled with 15 Finance Commission tied grants. And this also talks about, the 15 Finance Commission tied grants are supposed to be for the Panchayati Raj institution and urban local bodies. Of course, we said that, currently they are not empowered enough. But if you see the constitutional amendment to enable them to handle the health facilities within their region as such, took place in 1992 and 1993. But it's the first time the Finance Commission ever has given tied health grants. So currently these are being spent through NHM route only, but we are hopeful with the capacity building efforts which we are doing now, the next Finance Commission grants would be devolved directly to PRIs and ULB so that they manage the health facilities within their system as such. For ABDM, I think you all are, a lot of you are experts in the digital also in how that can be leveraged. I won't go into detail of that. But yes, I must say that the uptake from the private sector for the hospital registry is not as it should have been. So that's another area where we all need to strengthen that, so the entire M1, M2, M3 integration, as we call in common parlance, of the ABHA ID, individual ID, health professional registry and health facility registry, for a seamless integration of everyone's records, which will also give you that all that the HMIS and EHR, what we are talking about, all that till now, and that will, that entire stack will come up. So that needs to hasten up. The comprehensive primary health care, and that's where, from the hospital administration point of view also, you should now look at the healthcare facilities. And comprehensive primary health care starting from the community, not only from the sub-center health, Ayushman Arogya Mandir, from the community. And with the continuum of care, with referral up in case of requirement, and when they come down after referral, after treatment, again following them up in the community. But for that, we need appropriate number of diagnostics and drugs at various levels. And the Make in India as such, as Dr. Jitendra also mentioned, is being strengthened. Public health management cadre, for the governance, the 4 main pillars which are there, the teaching cadre, that the NMC's prerogative, but what we are looking from the health system is the specialist cadre, the other is the public health cadre, and third is health management cadre. So with defined career progression and the assured career progression also, and defined career pathways and promotional avenues to attract and retain the HR in public health sector. That's what will eventually make our system strong. The public health standards I've already mentioned earlier, with the quality assurance standards now even applicable up to the sub-center health and wellness center also. So that's where I think I must mention that NHRC is working very closely with the Academy of Hospital Administration to strengthen the capacities, and also to be part of, make the team of assessors from there, and also creating new courses now, which we are planning in very near future, to immediately create pool of assessors which can help us in accrediting the sub-center health and wellness centers. There's huge numbers, and as per the Honorable PM's vision, we need 10% to be certified, but even if we get 50% by 25-26, I think it would be a great achievement if we are able to do that. The other digital innovations and how HMIS can be linked up with IHIP, that's another area where the AHA can look at, because we need to now integrate all the portals, all the applications to have a seamless, and also reduce the workload on the healthcare workers. Artificial intelligence and cloud computing are other areas where I think we all need to work together on this, that when we create these solutions, they should be ethical, they should be patient-centered with data rights, and also, all the other safety aspects also. The public-private partnership in the secondary and tertiary care, a lot of successful examples. However, I still remember we used to have long discussions when I was in Planning Commission in 2007 and 8 with Dr. Montek Singh Ahluwalia and our health team as such, about the PPP document which was made that time by the erstwhile Planning Commission. And we were proved right subsequently that in primary health care, the PPP has not succeeded to the extent which one wanted. And that's where I think your expertise can also now look at
how to make better MOUs, how to make a system where we already can anticipate how gaming can take place and how to, with a Monte Simulo or other simulations, Monte Carlo, other simulations and all, we have counteractive measures to prevent that gaming so that both parties remain happy and that MOU continues. And we also need to look at the private provider, a tertiary care hospital, if that is coming into MOU for primary, whether that would be interested in the wellness, because that's something, as one of the co-panelists mentioned in the previous panel, the NCDs, 63% mortality because of NCDs, and that's another focus of ours as such right now for screening of hypertension, diabetes, and 3 common cancers. But again, linking them with these secondary and tertiary care centers for confirmational diagnosis, for treatment management, and follow-up subsequently with our healthcare workers with their capacity building as such. Those kind of MOUs, PPP modes are required where they are diagnosed early, diagnosed confirmation after screen positive, and also treatment is given. So again, that needs a lot of discussion, a lot of space which is available there, and a lot of good can be done for the community in a continuum of care approach. We at NHSRC work with the government, work with all organizations who are looking to strengthening the health system, and our website gives all the details and all. But to conclude, once again, I'm very thankful for this honor and this opportunity to be present here amongst you all and keep few points forward. I'm keenly looking forward to enriching discussions over the next technical sessions and all. And I wish all the very best for this conference. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Our next speaker, Dr. Girdhar Gyani, is Director General of Association of Healthcare Providers of India. Dr. Gyani is widely recognized as the founder of healthcare quality movement in India. He was Secretary General of Quality Council of India from 2003 to 2012, during which time he was pivotal in the formulation of the National Accreditation Board for Hospital and Healthcare Organization, NABH. He functioned as founder and CEO of NABH till his superannuation in 2012. During his tenure, about 200 leading hospitals in India got accredited, providing a much-needed boost to medical tourism. Dr. Gyani was elected director on the board of International Society for Quality in Healthcare, ISQA, for 4 years and was nominated member of Academic Council of MCI. He has been called by the SME World magazine as the quality man of India. Welcome, sir. Thank you very much. Because I thought, let me speak, give a little more time to our chief guest, Dr. Vinod Paul. So you are privileged that he will be, he is here today and you will be listening from him what is the latest and current happening in the country regarding the healthcare. Now to begin with, let me talk about AHA. You see, when we were launching NABH, the main problem came that how do hospitals actually implement? How do the government hospital implement? Let me tell you that initial journey, AHA was our partner, and I think they took the most difficult projects, including the J&K, to implement the NABH standard in those government hospitals. So actually that has been my association with the AHA right from beginning. That is number one. Now because here I'm representing the private healthcare sector, so let me say a few things here. As I can see, if you see the current or latest journey of the healthcare in India, it started from the 2017. 2017 is the year when we had the new health policy. And people were thinking that this healthcare policy is going to be on the paper. But no, within a year, the world's largest healthcare insurance scheme, Ayushman Bharat, got launched. Within 2 years, National Digital Health Mission has been launched. Now, if these two programs, the way they are running, if they go the way they were intended, India will become Vishwaguru in healthcare by 2047, if not earlier. That is my prediction. Now, luckily I will say, Dr. Vinod Paul has been part of this journey right from beginning. So what Jitendra was saying, the journey of AMTZ, I think we can also say that journey of the modern healthcare started before and after Dr. Vinod Paul. Because you are the one who has been witnessing, because I am very closely watching the way
the Niti Aayog is working. Now, let me tell you here, the AHPI is working hand in hand with the National Health Authority. 192 hospitals identified by us. NHA is implementing the digital health mission, although we were a little late, but as we said, you're never late before the late. We are actually going to pursue this project on the fast track mode. So these are the few things. Now coming back to few of the statistics. As per the database of HPI, there are around 12 lakhs beds in the private sector, around 8 lakhs beds in the government sector. Now put together, if you see, as per our population, the ratio comes 1.4 beds per 1,000 population. Now this is way short of what we are expected to have, 3.5 beds per 1,000 population as per the WHO norm. What we are expecting by 2047, not only it will reach 3.5, we should be touching 5 beds per 1,000 population. That is the norm for developed countries. So I think we have a long way to go. Now, my advice, to the government on various platforms has been that as a smart government, they need not invest capex in the healthcare. Of course, I'm not saying that they should not. But the best thing is you incentivize private sector to invest in the healthcare and then deliver the healthcare to the masses, to the population through the scheme. I think that is a model already in place, but I think that has to be hastened up. Because I mentioned to Dr. Vinod Paul in one of the meetings, and I reminded him that the resolve of Honorable Prime Minister was to have 3,000 hospitals in tier 3 towns, 100 bedded. I think we can call them Ayushman Bharat hospitals. Now that project somehow I think is not taking shape because ultimately it is dependent on the state government. But unless we make it happen, that means unless there are tertiary care 100-bed hospital in tier 3 towns, we will not be able to achieve the overall objective of achieving universal health coverage. Now, our database, we also revealed something different. You will be surprised that that is the availability, but if you come to accessibility, I think we are worst in that case. Availability is still 1.4 beds at least we have. But accessibility, when we found the data, Karnataka on one hand has got 4.2 beds per 1,000 population. And Bihar is 0.29 beds per 1,000. I think this is remarkable gap. Oh, somewhere I think Niti Aayog has to push the state like Bihar. Because that is the problem. All Bihar people come, poor people come all the way to Delhi or to a different part. So I think this data which we have, I think we are going to share with Niti Aayog, the report is already ready now, that state after state has got that huge variation. Now, even when you talk of Karnataka, which is the highest one in India, 4.2, but within Karnataka, if you see Bangalore, it will have 5.6 beds per 1,000 population, and some district in Karnataka also will have maybe 1 or 1.2 or 0.6. So I think somewhere now our planning should be that we decide or we allow opening of the hospitals in such a way that they do not crowd at one place, but they get spread out across the state. Then only I think we will be able to, in the true sense, make the healthcare available and accessible. And last point I would like to tell my members here, that we keep complaining that out of pocket used to be 70%, 60%. Of course, this I learned from Dr. Vinod Paul only long back. 40% population on paper at least is supposed to be covered under Ayushman Bharat. Why I am saying on paper? Because I know that some of the segment of population still we have not been able to reach out to them and give them the cards. That process is on. But at least we can say 40% population government has already earmarked. After that, if you add on
CGHS, ECHS, ESI, employee insurance scheme. Private insurance scheme now is increasing at very fast pace. Our general assessment, I can tell you, is that 70% of Indian population, in my opinion, I may be a little bit here and there, is covered one way or other. And remaining 30%, I think some reasonable percentage of this population is good enough to pay off their own. So I think we are definitely approaching the universal health coverage in real sense. Only problem is that we correct this accessibility factor. Availability to some extent, but accessibility factor, if you cover up, I think we will be able to do that. And my last point, which of course I have to represent the private sector, and we keep on requesting government, and Dr. Vinod Paul is here, that when we are contemplating utilizing private sector more and more for the tertiary care, I think we need to think seriously how do we fix the pricing of the medical procedures. I think that is the one factor which will motivate, incentivize more investment from the private sector. And my last line is, because government will always be short of the finance, the best thing is that we must think of introducing co-payment. There is a large segment of population which doesn't want free healthcare. They are prepared to pay, but not, of course, huge amount. So if you introduce the co-payment, I think burden on the government will also come down, and at the same time, a lot of private good hospitals will be able to come into the scheme initiated by the government. So I think these are my few thoughts, and once again, thanks to the Academy of the Hospital Administration for organizing this event. Thank you very much. It is a privilege now to invite for the next address Lieutenant General Daljit Singh, Ati Vishisht Seva Medal, President's Honorary Surgeon, Director General Armed Forces Medical Services, and Senior Colonel Commandant, Army Medical Corps. General Daljit Singh is an alumnus of the prestigious Armed Forces Medical College, Pune, and was commissioned in the Army on 17 December 1983. He holds a master's degree in pediatrics and has done his DM in neonatology from PGI Chandigarh. He is a diplomate of National Board in Pediatrics and a member of National Academy of Medical Sciences, India. He has been awarded the prestigious Fellowship in National Neonatology. In an exemplary career spanning 39 years, the General Officer has distinguished himself in professional, clinical, as well as administrative appointments. He has been a senior advisor pediatrics and neonatology at several premier tertiary care hospitals of the armed forces, an academic guide to postgraduate and super specialty students, publishing numerous papers in national and international journals. Prior to his appointment as DGFMS, on 15th March 23, he held the appointment of Director General Medical Services, Army. He has been awarded Chief of Air Staff Commendation in 2006, COS in 2011, Vishish Seva Medal in 2020, Ati Vishish Seva Medal in 2023, and conferred President Honorary Surgeon on 1st November 2021. Since November 2021, the General Officer is also the Senior Colonel Commandant of Army Medical Corps. General Daljit, please. आदरणीय डॉक्टर विनोद पाल जी, मेजर जनरल अतुल कोतवाल, SM VSM, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, डॉक्टर यशपाल शर्मा, एयर मार्शल पवन कपूर, जनरल विश्वास, डॉक्टर श्रीवास्तव, सीनियर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ बैठे हैं, देवी और सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि मैं
आज इस जगह पे आप सब लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप सबके सम्मुख। डॉक्टर विनोद पॉल को, डॉक्टर कोतवाल को, डॉक्टर पवन कपूर को, इनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बाकी डॉक्टर ज्ञानी ने अभी बहुत कुछ बोला, डॉक्टर यशपाल ने बोला, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बोला, वो और भी आपके यहाँ बहुत से लोग बैठे होंगे, हॉस्पिटल सीनियर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्वालिटी के बारे जिन्होंने बहुत कुछ किया है, इस देश में बहुत कुछ किया है। डॉक्टर ज्ञानी ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का कितना उसके अध्यक्ष रहे हैं और बहुत कुछ किया है। आप सबसे पहली बार मिला हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि रिसिलियंट हॉस्पिटल बनाने के लिए सेफ एंड सस्टेनेबल हॉस्पिटल्स कैसे बनाए जाते हैं, उनमें रिसोर्सफुलनेस, रिसिलियंस, जो उनका बेसिक कंपोनेंट्स उनके होने चाहिए कि उसके अंदर कैसे आप कोशिश करें कि उसको आप कितना अच्छा बना सकें, इस तरह से अच्छा बना सकें कोई भी आपदा आए तो उसका सामना करने की हमें क्षमता रहे। इस तरह की क्षमता के लिए हमें बार बार सीखना पड़ता है। हम गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, और फिर गलतियां करते हैं और फिर सीखते हैं। प्रकृति हमारी दोस्त भी है, और जैसे सुंदर सुंदर फूल और पौधे जैसे दोस्त है, और कभी कभी प्रकृति रौद्र रूप में भी आती है। अभी निगजॉम चक्रवात आया है, कभी बाढ़ आते हैं, कभी भूकंप आते हैं। उनका सामना हम कैसे करते हैं? पिछले 50 साल में तो बड़े अच्छे सिस्टम डेवलप हो गए हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। और साइक्लोन, जितने भी साइक्लोन आते हैं, हम समुद्र की तरफ से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जैसे मद्रास में, चेन्नई में 2015 में जैसे फ्लड आए थे, उसी तरह से अब फिर फ्लड आए हैं, और लोग बोल रहे हैं इन्होंने पिछले 8 साल में क्या किया। वही की वही हालत है। तो मनुष्य सीखता भी है, पर मनुष्य की गलतियाँ भी चलती रहती हैं, और इसी तरह हम सीखते हुए, संभलते हुए, वही हमारी अडेप्टेबिलिटी है, वही हमारी एड्रेसिंग द वल्नरेबिलिटीज़ है कि किस तरह से हम अपनी कमजोरियों को कोशिश करें कि वो कमजोरियां हमारी ख़त्म हों, उन लूप होल्स को बंद करें, ताकि एकदम अचानक कुछ हो जाए, प्रकृति से हो जाए या मनुष्य से हो जाए। मनुष्य ही बहुत कुछ कर सकता है। कोविड का जो पैंडेमिक था, मनुष्यों का ही किया हुआ था। कल लोकसभा में 2 लोग कूद गए थे, उनके पैर में कलरफुल धुएं का एक बॉम्ब था, वो कोई केमिकल बॉम्ब भी हो सकता था। तो क्या हम उस इमरजेंसी के लिए तैयार थे कि सडनली एक जहरीली गैस पूरी पार्लियामेंट हाउस में फैल जाए? तो उन लोगों को आप कैसे बचाएंगे? कुछ आपदाएं जिनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कुछ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर एक तरीका हमने डेवलप करना है कि उस तरीके से अपने आप को, एक सिस्टम कि किस तरह से हम अपने आप को उन आपदाओं से जो प्रेडिक्टेबल्स हैं कि ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा, एटलीस्ट उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे अपने आप को बचा सकें, उसके लिए अपने आप को तैयार रख सकें। और इसी तरह मनुष्य की जो मनुष्य समाज है चलता रहता है। यही हमारा एवोल्यूशन है कि हम आगे बढ़ते जाएं, प्रकृति को साथ लेके चलें। तभी हम ग्रीन हॉस्पिटल्स बोलते हैं कि प्रकृति हमारे साथ रहे, हमारे अगेंस्ट मत जाए, क्योंकि अगर हम प्रकृति का नुकसान करेंगे तो कल प्रकृति भी हमारे खिलाफ कुछ कर सकती है। तो इस तरह का हमारा अगर चलते रहे हम लोग, तो हम ठीक से काम करते रहेंगे। जनरल कोतवाल ने, डॉक्टर ज्ञानी ने और डॉक्टर जितेंद्र ने कितना कुछ आपको बताया, कितना कुछ सरकार कर रही है, कितना कुछ सभी लोग आप मिलकर कर रहे हैं। वो एक सही ढंग से इसी तरह चलता रहे तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बात आपको समझनी है, पर यह काम रुकना नहीं चाहिए। हम कभी अपने लॉरेल्स पे रेस्ट नहीं कर सकते। हम फौज में बोलते हैं कि अगर आप शांति के समय पसीना बहाएंगे तो आपको युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ेगा। ये हमें समझना चाहिए और इसी तरह कार्य करते रहना चाहिए। मैं आपको सिर्फ 2 या 3 उदाहरण दूंगा। 2001 में 26 जनवरी को जब भूकंप आया था, हमारा एक छोटा सा अस्पताल है MH भुज, सैनिक अस्पताल है भुज के अंदर, छोटा सा अस्पताल। वहाँ आसपास की बिल्डिंगों को बहुत ज़्यादा डैमेज आई थी। मिलिट्री हॉस्पिटल भुज की बिल्डिंग्स को भी डैमेज आई थी, पर वहाँ तुरंत और सिर्फ वहाँ एक सर्जन, एक एनेस्थेटिस्ट, एक गायनेकोलॉजिस्ट, सिर्फ ये डॉक्टर्स थे वहाँ पे, और एक मेडिकल ऑफिसर। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को मार्शल किया। एनेस्थीसिया मशीन थी, OT टेबल था, और उस समय आपको याद है भूकंप में क्या होता है, फ्रैक्चर ज़्यादा आते हैं, इंजरी जो कंप्रेशन इंजरी वो ज़्यादा आती हैं। फ्रैक्चर्स के लिए क्या इलाज करना है, स्प्लिंट्स चाहिए, प्लास्टिक POP कास्ट चाहिए, ब्लीडिंग के इशू ज़्यादा नहीं होते।
कोल्ड एक्सपोजर इंजरी बहुत होती थी, उसके लिए क्या करना है, ब्लैंकेट चाहिए, सर्दी से बचा के रखना है, और इस तरह से आईवी फ्लूइड्स चाहिए अगर किसी को सर्जरी आपने की है। तो ये सब मार्शल किए गए और आसपास जहाँ भी हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल से, वहाँ से तुरंत सप्लाईज उठाई गई, सर्जिकल टीम्स को वहाँ लाया गया, और इतना अच्छा काम एमएच भुज के अंदर हुआ कि उसको गुजरात सरकार ने उस समय सेवियर ऑफ कच्छ का अवार्ड दिया। आप समझ सकते हैं, बहुत सारे उस समय इजराइल से भी टीम आई थी और कहीं से भी टीम आई, बहुत सारी टीम्स आई थी, पर वो एक छोटा अस्पताल, वो उसको खुद डैमेज हुई थी, पर उसके बावजूद रिसीलियंस के साथ अपने रिसोर्सेज को मार्शल करके फिर उस अस्पताल ने लोगों की जानें बचाई, लोगों की जिनको इंजरी हुई थी उनको ठीक किया, प्लास्टर्स लगाए, स्प्लिंट्स लगाए, और जो कुछ उसमें किया जा सकता था इन डॉक्टर्स ने मिलकर किया। तो ये पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस तरह की रिसीलियंस होनी चाहिए हमारे सिस्टम के अंदर कि सडनली कुछ हो जाए तो उसको हमने कैसे एड्रेस करना है। आपको याद होगा, इसी अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है, 6 फरवरी 2023 को 6 बजे फरवरी तुर्की में भूकंप आया था। 10 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे डाल दिया था कि तुर्की की हम हर संभव सहायता करेंगे। 11 बजे हमें संदेश आ गया था कि अपने सोर्सेज को मार्शल करो और हमें तुर्की में टीम भेजनी है। पहले हम सोच रहे थे 5 लोग भेजें, 10 लोग भेजें, 15 लोग भेजें। उस समय के इन सब आपदाओं के लिए जो आकस्मिक होती हैं, हमारे कुछ प्लान्स होते हैं। जनरल अरिंदम ने आपको बताया, एयर मार्शल पवन कपूर ने आपको बताया कि ये प्लान्स रहती हैं कि अगर सडनली कोई क्राइसिस आता है तो उस समय हमें क्या करना है। हमारी एक यूनिट है 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल आगरा में। इस 60 पैरा फील्ड अस्पताल ने यूएन मिशन, जो हमारे यूएन कॉन्टिजेंट जाते हैं, कोरिया में जाके बहुत नाम कमाया था। आज भी कोरिया के एम्बेसडर हर साल आगरा जाके इस अस्पताल में जाके कोरिया के एम्बेसडर जाके मिल के आते हैं और अपना धन्यवाद और कुछ गिफ्ट वगैरह इस यूनिट को दे के आते हैं। तो उसकी मैं कहानी आपको बता रहा हूँ कि 12 बजे हमने इनको मैसेज दिया 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल को कि आपको तुरंत तैयार होके तुर्की के लिए रवाना होना है। तब तक कुछ नहीं हुआ था। तुरंत जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं शुरू हो गए। सब 99 लोग टोटल हमारे गए थे उस समय। सभी लोग आ गए, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, सीओ यूनिट के जो थे उनको, वो कहीं लखनऊ के पास थे, उनको तुरंत वहाँ से रवाना हुए कि तुरंत, क्योंकि यूनिट को हमेशा कमांडिंग ऑफिसर लीड करता है। कोई और अगर लीड करे तो उतना अच्छा काम नहीं हो पाता। एक सीओ, क्योंकि जो जवान होते हैं, अफसर होते हैं, वो सीओ के प्रति एक खास श्रद्धा रखते हैं, रिगार्ड रखते हैं और उसी की सुनते हैं। वो सीओ यहाँ बैठे हैं, कर्नल यदुवीर, आपने टीवी पे इनकी फ़ोटो देखी होगी ज़रूर, जब प्रधानमंत्री के पास ये गए थे अपने कॉन्टिजेंट के साथ। कल यदुवीर के साथ वो टीम इकट्ठी हुई वहीं पे। हम बोलते हैं वॉर मेंटेनेंस रिजर्व्स, वो वॉर मेंटेनेंस रिजर्व इकट्ठे किए गए। उन सबके साथ प्लान थी कि हिंडन आएंगे और हिंडन से तुर्की जाएंगे। किसी के पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं था और तुर्की ने क्लियर कर दिया कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होना जरूरी है। तो रात के अंदर हमारे यहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और एमओडी के ऑफिशियल पूरी रात जागे। सब के सब 99 लोगों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाए गए। वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 99 बनाए गए, सब लोग यहाँ पे आए। 7 तारीख को 1 बजे ये लोग, 6 तारीख को सुबह भूकंप आया था, 7 तारीख को ये लोग हिंडन में थे। 4 बजे वहाँ से उड़े, रात को अडाना एयरपोर्ट पहुँचे तुर्की में। उस समय हमने क्या क्या प्लान की थी, क्या क्या हमने सोचा था। हमने सोचा कि तुर्की में जाएंगे, वही भूकंप आया था तो फ्रैक्चर ज़्यादा होंगे, ब्लंट इंजरी ज़्यादा होंगी, तो उस तरह का इक्विपमेंट लेना चाहिए। तो हमारी एनेस्थीसिया मशीन, हमारी एक्सरे मशीन, हमारे कास्टिंग मटेरियल्स, वो सब हमने साथ में लिए। ठंड बहुत होती थी तुर्की में, तो सब जीरो टेम्परेचर था उस समय। तो हमने ब्लैंकेट्स और बाकी जो ब्लैंकेट्स बेसिकली जो भी, और इन सब जो हमारे जो नर्सिंग असिस्टेंट्स जो साथ में हमारे थे, ऑफिसर्स थे, इनके लिए जो कपड़े होते हैं स्पेशल विंटर क्लोथिंग, इनके लिए इशू करवाए गए, जूते इशू करवाए गए। और क्या चाहिए था, जिस तरह का मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए था आगरा से, दिल्ली में हमारे एक आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपो होता है, वहाँ पे वॉर मेंटेनेंस रिजर्व रखे जाते हैं, वो तुरंत मोबिलाइज किए गए। तुर्की में जाके हमें ये नहीं पता था कि हमें गाड़ी मिलेगी कि नहीं, गाड़ियाँ साथ में ली गई, गाड़ियों में पेट्रोल लिया गया और ये सब सर करके 2 C-17 हवाई जहाज रात को उड़ के
6 तारीख शुरू हुआ था, 7 तारीख की मिडनाइट को ये लोग अडाना में पहुंच गए। अडाना से इनको बताया गया कि एक जगह है इस्कंदरिया जाइए, वहाँ पे आपको अपना हॉस्पिटल सेटअप करना है। तो इन लोगों ने वहाँ से चले, गाड़ियों में चले अपना सामान लेकर, और तुरंत जाके एक बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग देखी जो अनडैमेज थी, उसमें जाके इन्होंने अपना तुरंत हॉस्पिटल खोला। और उसके बाद जो हुआ वो तो हिस्ट्री है। इन लोगों ने कितना नाम कमाया, हर रोज़ 500 के आसपास मरीज इन्होंने देखे। और जिस तरह हमारे इंडियन डॉक्टर्स ने, फौजी जो हमारे मिलिट्री के डॉक्टर्स थे और नर्सिंग असिस्टेंट्स ने, लेडी मेडिकल ऑफिसर भी थी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी थे, इन सब ने जितनी अच्छे तरीके से मरीजों का इलाज किया, उनसे बात की, बहुत वहाँ पे बहुत पॉपुलर हो, अगर आपको याद हो या ना हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, सिविलियंस ना फौजियों के बारे से उसी समय याद रखते हैं जब एक्शन हो रहा होता है, उस समय उनकी देश भावना बढ़ जाती है, सब कुछ होता है, बाद में भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको दोबारा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो देश के प्रति भावना है, अभी बोला था यहाँ से पवन कपूर सर ने बोला था, डॉक्टर ज्ञानी ने सब बोल रहे हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आप भी, हम भी, सभी देश के लिए काम कर रहे हैं। और ये देश के लिए काम करने की भावना हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए कि जो भी काम हो रहा है इस देश के लिए हो रहा है। तो इन जवानों ने, इन डॉक्टर्स ने वहाँ पे जो काम किया, उससे हमें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि टर्की के 48 आवर्स के अंदर इन्होंने, भूकंप होने के बाद इस टीम ने जाके वहाँ अस्पताल इस्टेब्लिश कर दिया। टर्की की कोई टीम वहाँ नहीं पहुँची थी, किसी और देश की कोई टीम वहाँ नहीं पहुँची थी, इन लोगों का अस्पताल 48 आवर्स में इस्टेब्लिश हो गया। ये लोग 10 दिन रहे वहाँ पे, बहुत मरीज देखे, बहुत हमारे लिए पॉपुलैरिटी गेन की। इतना हो गया कि उसके बाद जब भी कोई भूकंप, कोई आपदा होती है, दूसरे देशों को हमसे मदद लेने में हिचक होती है, क्योंकि लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि भारतीय टीम आई थी, उन्होंने ऐसा किया। मोरक्को में भूकंप आया था, उन्होंने हमसे मदद लेने से इनकार कर दिया। नेपाल में भूकंप आया था, उन्होंने हमसे मदद लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि सोचते हैं कि अगर एक कंपेरिजन किया गया, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला है, वसुधैवम कुटुंबकम। मोरक्को में जब भूकंप आया था, प्रधानमंत्री तुरंत एक्स पे जाकर उन्होंने बोला कि हम पूरी मदद, G20 के दिन मॉर्निंग में भूकंप आया था, कि हम तुरंत सभी सहायता देने को तैयार हैं। तुरंत इनको हमने फिर से एक्टिवेट कर दिया था, फिर 60 पर फिर से एक्टिवेटेड, चलने को तैयार रही है। फिर अभी नेपाल में भूकंप आया था, फिर यही चीज़ थी कि चलने को तैयार रही है। तो इस तरह से अगर हम अपने चीज़ों को प्लान करते रहेंगे, उससे हमें लेसन भी मिलते हैं, हमें क्या समझ आएगा, क्या कर सकते हैं। हम 48 आवर्स में पहुँचे, अगर शायद में 24 आवर्स में पहुँचना तो क्या करना पड़ेगा। आपने शायद देखा हो कि हमने एक आरोग्य मैत्री क्यूब डेवलप किया है, कि डिज़ास्टर की सिचुएशन में हम एक 20 बेड्स का 200 पेशेंट की इलाज के लिए, 200 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए एक स्मार्ट क्यूब होता है, जिसमें जो भी इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, और नॉट ओनली मेडिकल इक्विपमेंट, आपकी ओटी का सामान, आपकी लैब का सामान, आपकी एक्सरे मशीन, वो सारे 2 क्यूब्स में आ जाएगी। कोई 200 किलो के अंदर सारा सामान आ जाएगा, और वो लेके आप 6 घंटे के अंदर कहीं भी पहुंच के अस्पताल इस्टेब्लिश करते हैं। वो हमारी अडेप्टेबिलिटी है कि उसको देखते हुए हमने ये लेसन सीखा है कि हमारे इक्विपमेंट तैयार रहने चाहिए, रिप्लेसमेंट होती रहनी चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल रहना चाहिए, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। आप तो सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी भी ज्ञानी हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ भी काम करना हो, आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी कि आप अपने लॉरेंस पे रुक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमने अचीव कर लिया, अब आगे कुछ करने को नहीं है। और सेकेंडली, ये भावना हमेशा अपने अंदर रखनी पड़ेगी कि अपने लिए नहीं, आप जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। जब आपके अंदर ये भावना आएगी कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा, मैं इस देश के लिए कर रहा हूँ, अगर कहीं भी हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होगा तो वो देश के लिए अच्छा होगा। जितने लोगों को हम बचा पाएंगे वो देश के लिए अपना योगदान देंगे, ये बात आप समझिए। तो अब जो भी काम कर रहे हैं वो देश के लिए कीजिए, इसी भावना से कीजिए, और ऐसे करते रहेंगे तो उसमें कोई शक नहीं है कि सैश का जो उद्देश्य है कि सस्टेनेबल हॉस्पिटल्स, सेफ हॉस्पिटल्स और रिसिलियंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, ये उद्देश्य जरूर पूरा होगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। We now request our guest of honor, Professor Dr. Vinod Paul, to kindly release the souvenir of the conference, SASH 2023.
Thank you, sir. Now, for the much awaited address by our guest of honor, Professor Dr. Vinod Pal. Sir is the health member of Niti Aayog. He is an eminent neonatologist and has been a member of faculty at AIIMS Delhi. Sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for the kind introduction. Namaste, good afternoon. Very respected Lieutenant General Daljit Singh, sir. General Atul Kotwal ji, Dr. Girdhar Gyani ji, Dr. Jitendra Sharma ji, Dr. Yashpal, my student, friend, philosopher Shyama ji, and above all, the distinguished leadership of hospital administration in the audience, leaders, pioneers, and today's Karmyogis and tomorrow's leaders in the audience in the space of hospital administration of India. So big hand to the leaders first, because आपने एक मुहिम करी, आपने सेवा करी, रिसोर्स लिमिटेड होते हुए भी प्रूव करके दिखाया अच्छे अस्पताल कैसे चलते हैं और इसको एक डिसिप्लिन की तरह आपने बढ़ाया, तो बहुत बधाई हो. आई एम ऑनर्ड टू बी हियर अमंगस्ट यू टू लर्न a lot of new information, new sentiments, and to be able to get ideas to work on. So thank you, Yashpal sir and Shyama ji, for the opportunity. Let me start by picking up a few threads that have been brought to the fore in our discussions here. We really had the opportunity to listen to the speakers here and also the previous section. I think we can surely say that the last 9 years have seen a very major transformation in the health sector. I think that's the first thing we all should recognize, believe, and then move on to contribute more in our own spheres toward the larger goal of Viksit Bharat and a superb world's best health system well before that for India. We have seen some developments, reference had been made to Ayushman Bharat, Ayushman Digital Health Mission. We heard about efforts to improve public health management in the public health system, public health cadre, specialist cadre. These are reforms of significant depth and importance in the space of healthcare. We know government medical colleges have doubled in these 9 years. Undergraduate seats have more than doubled from 52,000 to 1,08,000. Please chip in to ensure higher quality. We need all these doctors. Our specific deficits are in the space of postgraduates. The deficit is 1. We have 1 where we should have 5. Please work in that direction. So the seats have moved from about 32,000 to 68,000. But also on the macro level, we are also seeing things that would matter to health, which are important. Multidimensional poverty, for example, has come down to the extent of 25% at the start and 15% in 1920. So that's multidimensional poverty. 13.5 crore Indians, brothers and sisters, have come out of poverty during this period of time. And this is the data that NITI develops. Methodology is well known. Likewise, the reduction in multidimensional poverty, you will be surprised, is so much more in the rural areas, from 33% to about 19% than urban areas. So we are seeing improvement with an equity perspective as well. I like to also highlight that there are social determinants and indirect determinants of health. Air pollution related
issues, 9 crore Ujjwala gas connections, 11 crore toilets, and every second a new tap water connection is being provided in rural India. Every second. Every second. At the start of this MoHim, Jal Jeevan Mission, 17% rural households had tap water. Today, it is not 1.7, but 7.1. And once this mission is done, it would have provided tap water over 3 to 4 years' time to equivalent of the entire population of USA, Europe, Brazil, and whatnot. You know, it's the kind of transformation that's going on which will help many causes, but particularly also the cause of health. So just to add to the point that these are exciting times for the health sector, and please build on this. Please tell us what more we can do. We are seeing, the enabling policies for the MedTech sector and the pharma sector. There is a MedTech, pharma MedTech R&D policy that has been launched this year earlier. MedTech devices policy. And we have a PLI type scheme for research in the pharma and MedTech system, the PRIP scheme. So there are many, many buttons that are being pressed which should help in a very significant way to build a strong health system. I'm learning a great deal about resilient health systems. I'm absorbing the thoughts that have been brought forth in the last panel chaired by Air Marshal Kapoor and now from Dr. Daljit in particular. And I think it is summed up in what he said: if you sweat more in peace, you bleed less in war. And to me, it means really be ready, be prepared, and have SOPs. Merely saying I want to be ready is not enough. It's about SOPs. It's about knowing where we would go when the time arises. On the safety, so please guide us on how to build the ecosystem for a resilient health system, because we know with climate change, there will be damage to our health facilities going forward. We are seeing those upheavals now. I'm privy to the fact that in Himachal, the cloud burst situation that happened very recently, it actually damaged 20% of health facilities, largely small, 20%, gone. Needed some or a major repair. So this can be at a scale which we may not recognize, and therefore I would urge that let's create a pathway as to how to bring it to the level of policy discourse and bring it in a systematic way in a professional way as to how to communicate this and how to prepare this, both in the public sector and in the private sector. And public sector would also mean how to work with the states to make appropriate system. But on safety, I have one major suggestion to you, please. Too many fires in hospitals. Every year we get fires in hospitals, often starting in the ICUs, because there are a lot of gadgets and often it is electric, short circuit, very often, or a burnout of a machine which has been overcharging. So till you find a magical cure for those things, for the medical devices, may I request if we can think about putting some kind of a sensors linked through IoT, Internet of Things, which gives you an early warning that this damn thing is heating up beyond a point. ऐसा एक simple सा क्या चीज़ हो सकती है? ये मेरे मन में कुछ दिनों से है. I had the opportunity to see the 5G exhibition last year in a big way, but I'm wondering, I have not really found some takers for it. Can you spread the word that measures to reduce fire in general, but I am wondering how we can monitor the health of our machines, the way we run our machines, in the temperatures where we run, to see and to identify a machine which is likely to go rogue, or a switch that's likely to go rogue, or a wiring that's going to fail. I think it will be very useful. And on the larger front, I request Yashpal ji, think about how to prevent fires as a philosophy, and develop an SOP or develop a checklist. Let's create a culture of fire
no fire hospitals, because every year it happens and it worries and it's very painful. People, not easy for people to accept that their newborns can be charred, putting it rather, prosily. Having said that, I also would like to inform on the MedTech point that I noted that we are trying to create an ecosystem for those MedTech devices which are ready to be tested in clinical setting and community setting to have a gateway, a facilitatory gateway, a Maitri, MedTech Maitri, where the innovator can join hands with clinicians, with clinical settings, and hand is held for wading through the regulatory process as well. So for this, the innovator would come to ICMR. That's where we are trying to create a system. Hand holding will be done, connections will be made, and so we may say, okay, for this you go to Sri Chitra and they'll help you, and we'll create a system how to do that. And from then, clinical evaluation happens, and we follow the path of regulation and facilitate regulatory pathway for that innovator. एक ये चीज़ भी कर रहे हैं. It might be useful in due course. Let me now make before I make my 5 asks, Girdhar Gyani ji has updated us on challenge of numbers and distribution, and thank you for bringing forth the notion of distribution and access and equity in the healthcare system, in particular the hospitals. I'm happy to inform you that we have held a consultation, some of you were present, where we are looking at how we can give a boost to healthcare hospitals, healthcare system, let me say state hospitals in the private sector. This consultation was very useful. A couple of things came out. One, of course, the HR challenge holds back a lot of expansion. Agreed. Second, we are told that capital is not an issue. We are told land is an issue at times, but what we are told is the compliances, local compliances are a big deterrent. We are working, I'm happy to inform you that we have taken up this issue systematically. We have done landscaping of what compliances are there, and they are in 10s and 30s and so on. How can we make them rational? How can we try to do them away? There are municipal, fire, state, and so on. And then there are some which are, tax, etc. But whatever can be modified should be modified. NITI has been working in the space of reducing compliances in several other sectors. So we have experience of how to tweak all this. We'll be happy if you help us provide inputs. And above all, again, we'll be very happy how to move from the current bed ratio to a 3 times ratio and beyond in times to come. Please offer your suggestions. It's work in progress on our part. We would definitely like to see expansion of hospital beds in the private sector in a very, very big way, because it has to come from that direction. From the public health side, public system side, a lot is happening, a lot more should happen. Some of it has been referred to, but we're looking forward to supporting you in the expansion of the private healthcare system. I'd now like to come, in the end, to 5 asks that I have. First, on human resources for hospital administrators. Very close to my heart. India has to ensure that we run our hospitals professionally. Private sector, government sector. Small, medium, or big. They cannot be run by the common sense of clinicians or others. They have to run professionally, and you are the custodian of that knowledge and that system and the scale up. You have done it. So my request to you is, please start thinking about how in a finite period of time we can ensure that the hospitals are really run by hospital administration professionals. What number kya hai?
ज़िले के नंबर देखिए, प्राइवेट के देखिए, और उसको बनाने के लिए टीम कितने साइज़ की चाहिए, उसको कैसे बनाना होगा। मेरी रिक्वेस्ट पहली मीटिंग में भी थी कि इसका एक ब्लूप्रिंट आप सोचिए, और फिर ये सोचिए कि हमें कितने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स पीजी लेवल पे चाहिए, वो एमडी कितने चाहिए, और फिर वो कैसे बनेंगे। अभी कितनी सीटें हैं, बहुत कम है, पाइपलाइन बहुत वीक है। हाउ टू गो अबाउट डूइंग इट, हैव अ ब्लूप्रिंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन गो अराउंड making an effort. I do believe that all medical colleges eventually, the ones which are now mature and more, and all new AIMSs and INIs, must have hospital administration department. Make it happen, make some noise about it. सबको बताइए, फिर मदद करिए कि डिपार्टमेंट खुल जाए तो फैकल्टी में मदद करिए। एक तरीके से इसको हमें लाना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स नाउ अबाउट क्वालिटी running of hospital. The hospital systems are complex. They cannot be left to a pediatrician or a surgeon. No. Time has come that we show our capabilities in building this HR base and make sure that we come high on running the hospitals. Apart from looking for seats from the NMC, please, again a reminder, look at National Board of Examination system. All of you are running hospitals. आप ये सोचिए कि मैं अपने हॉस्पिटल में का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर एनबी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, डीएनबी, तो करना शुरू करिए। नथिंग मच इज़ रिक्वायर्ड। एटलीस्ट जहाँ जहाँ भी आप हैं, एक 8 साल के एक्सपीरियंस वाला, एक 5 साल के वाला, दैट्स ऑल दैट यू नीड आई गेस एंड रनिंग हॉस्पिटल। टीएनबी कोर्सेज शुरू करिए, फ्लेक्सिबल है, आसान है, रिजिलियंट सिस्टम है ये। इस स्कोप को प्लीज हार्नेस करिए। अगेन द अकेडमी शुड वर्क ऑन सी वेयर सच स्पॉट्स आर, विच आर द हॉस्पिटल्स विच आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग। एंड इन फैक्ट माय एक्सपेक्टेशन इज, बिकॉज यू आर इन द लीडरशिप पोजीशंस इन योर हॉस्पिटल्स, you have an influence over the other specialists and teams, please promote DNB across other specialties as well. पर अपना घर तो शुरुआत करिए, बड़े तरीके से करिए। और आर्म फोर्सेस में भी बहुत स्कोप है, हमारे PSUs में भी बहुत स्कोप है, और ज्ञानी सर आप तो बता ही सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये हो सकता है। प्लीज़ इसमें लग जाइए। पाइपलाइन होगी तो नॉर्म्स भी बनते जाएंगे, नॉर्म्स हैं, पाइपलाइन भी खुलती जाएगी, ये दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। वन अदर रिक्वेस्ट आई हैव इज, प्लीज इन योर हॉस्पिटल प्रमोट नर्सिंग ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज, ट्रेनिंग ऑफ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स सच एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सच एज साइकाट्रिक सोशल वर्कर्स, फिजियोथेरेपिस्ट एंड सो ऑन। इसको भी लेकर चलिए। वो जो बेड्स की बात अभी करी जा रही है, वो सारे बेड क्लिनिकल केयर के लिए ही नहीं है सिर्फ, उन सारे बेड से हमने एजुकेशन भी लेना, यही तो है हमारे पास। So every bed, every hospital bed is for care, but also for training. Every bed. वो कैसे संभव होगा ये सोचिए। DNB करिए, सर्टिफिकेट कोर्स करिए, नर्सिंग कॉलेज चलाइए। ये भावना नहीं आएगी तो HR का जो विशेष साइकिल है वो चलता ही जाएगा। कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी हमारी रेशो डॉक्टर टू नर्स इज अबाउट 1.5। ये 3 गुना तो हम mid-30s तक करने का कोशिश करना चाहिए, फिर शायद उससे ऊपर जाएंगे। वी सी हेल्थ सिस्टम एंड हेल्थ इज एन एनेबलर फॉर आवर ग्लोरी एज अ विकसित भारत। विकसित भारत बनाने में हमारा योगदान है, उसको बनाने में हमारा वर्ल्ड क्लास विकसित हेल्थ सिस्टम उससे बहुत पहले बनना होगा। उस दिन की वेट नहीं करेंगे, वो बहुत दूर है। हम अच्छा बनाएंगे, हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो विकसित भारत बनने में, प्रोग्रेस में, वेल्थ क्रिएशन में बहुत मदद होगी, बिकॉज हेल्दी सोसाइटी इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग। I also have one more point here which I very humbly request you to please consider related to HR, and that is kindly look at the conditions and the salaries in the private sector, what we pay to our nurses and perhaps allied professionals also. थोड़ा सा ख्याल रखिए। I find at times that the salaries offered to our nurses are as low as 12,000, 13,000, 16,000. आप अपने ड्राइवर को उससे ज़्यादा देते हैं, थोड़ा सा नज़र रखिए। स्पेशलिस्ट को हम और ही तरह की सैलरी देते हैं। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट होगा फॉर दीज आर प्रोफेशनल्स अदर दैन डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को भी करिए ख्याल, लेकिन अदर दैन डॉक्टर्स में जो ये ग्रेडियंट है
उसको थोड़ा कंसिडर करिए. इट इज़ डिमोरलाइजिंग. एंड देन in that meeting it came up that there is a lot of attrition of nurses. बार बार आ रहा था, nurses की भी attrition है. तो आप वर्क प्लेस पे कैसे चल रहा है उनका, ये भी हमें ख्याल रखना है. उनकी बेसिक नीड्स, इनका ख्याल रखना चाहिए. My second request, now very straightforward request, is that please promote better emergency care in your hospitals. थोड़ा फोकस करें. क्या हम अगले 3-4 साल इस पे फोकस कर सकते हैं? Not as a diktat from anybody or from diktat from the academy, because the SDG related to road traffic accident mortality to be brought down by half, or NCD mortality to be brought down by half, a lot depends that the third delay should not take place. बाहर से जो डिले है उसके लिए और काम करेगी, लेकिन अंदर हमारे ऑर्गेनाइज्ड इमरजेंसी सिस्टम्स में कमियां हैं. May I request you to please think how to really professionalize emergency. बड़े thin presence होती है. प्राइवेट में भी देखो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी फ्रेगमेंटेड है. मैं उधर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा. शॉर्ट पॉइंट इज, कैन वी से वी नीड टू स्ट्रेंथन मैनी थिंग्स. कैन यू टेक फ्रॉम मी दैट लेट्स वर्क ऑन सिस्टमेटिकली स्ट्रेंथनिंग इमरजेंसी सिस्टम्स. एम्बुलेंस सर्विस भी इम्प्रूव होनी चाहिए. शुरू में जो हुआ उसके बाद ट्रॉमा की केयर क्या होनी है, हार्ट की केयर, लेकिन इमरजेंसी रूम में थर्ड डिले नहीं होनी चाहिए. अगर उसको थ्रोम्बोलाइसिस होना है तो जल्दी हो, स्नेक बाइट है तो ट्रीटमेंट एकदम से जल्दी हो, ट्रॉमा है तो सब ठीक हो. कैन वी फोकस एंड क्रिएट एन एग्जाम्पल विच यू मे लाइक टू क्रेडिट एंड शोकेस फॉर emergency services. My third request is, please, one part of safety is safety against drug resistant bugs. Antimicrobial resistance पे हमें अब फोकस करना चाहिए. उसकी there are many dimensions to it, but one way out, well, or shall we say one major strategy is the rational use of antibiotics. ये तो हमेशा ही आता है, फालतू में नहीं देने चाहिए, लेकिन इसको हम ऑर्गेनाइज एफर्ट से कैसे ला सकते हैं, दैट इज़ माई रिक्वेस्ट. दैट मीन्स SOPs, एग्रीड SOPs, कंफर्ट जोन में रहें सब कि भाई मैंने ऐसा फैसला किया. अपने पेशेंट को हम बहुत मदद करते हैं, ये भी दे दो, ये भी दे दो. हैंड होल्ड करेंगे तो वील कवर यू. आपका डिसीजन खराब होगा कोई बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है. ऐसी भावना लानी पड़ेगी. प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए. बट आई वुड लाइक अस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फॉर्मल एंटीमाइक्रोबियल स्टूडेंटशिप प्रोग्राम which has the following other elements. One, SOP or protocol, treatment protocol. Second, it monitors the organisms that are there in your hospital. Third, it monitors the use of antibiotics in a systematic way. आपके डैशबोर्ड पे दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है. Fourth, which is most important, is a gated access to antibiotics. Gated access का मतलब है कि हर के हाथ में लिबर्टी ही नहीं है किसी सारे एंटीबायोटिक्स जो रिजर्व एंटीबायोटिक्स है, प्रोटेक्ट सेव एंटीबायोटिक्स हैं, फोर्थ लाइन वाला एंटीबायोटिक है. उसके लिए आई लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल इन माय ओन humble way in my department, and this can be done in unit level, department level and hospital wide. So ऐसा नहीं है कि सभी को ही शुरू आप अपने आप से ही कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने अस्पताल में ही कर सकते हैं. तो उसमें ये है, एग्जांपल दे रहा हूँ. पीडियाट्रिक्स में आई लुक आफ्टर नियोनेटोलॉजी, बट आई वाज हेड, सो आई सेड फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स एनीबडी कैन प्रिस्क्राइब, रेजिडेंट, इंटर्न, एनीबडी, डोंट आस्क. उसके ऊपर वाला ओनली कंसल्टेंट विल प्रिस्क्राइब. वो लिस्ट बना दी कि ये 2-3 आप ही करोगे. उसके ऊपर एक लगा दिया जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलेगा तभी देंगे आप, तो जस्टिफाई करो. और उसके ऊपर भी एक लेयर लगाई, उसका एग्जांपल था कोलेस्टिन एंड वन मोर परहैप्स. वो मैंने कहा मेरे से पूछे बिना आप कहीं भी नहीं लगाओगे, चाहे ये पल्मोनोलॉजी यूनिट है या नेफ्रोलॉजी है या न्यूरोलॉजी है. सो अकाउंटेबिलिटी आ गया, दैट यू हैव टू जस्टिफाई, शो योर रिकॉर्ड्स, जस्टिफाई, बनता है नहीं बनता. एंड द पर्सन ऑल्सो गेट्स कॉन्फिडेंस दैट if I follow the SOP and a decision by somebody else. May I request you to kindly create a national movement on rational use of antibiotics, but taking the real accountable approach, which is nothing but antimicrobial stewardship program. इसकी कैपेसिटी बनाइए. ये मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन, और आपके हाथ में ताकत है. See, you are that leadership position. You are the master key. नहीं तो मेरे जैसा एक अपने डिपार्टमेंट में कोशिश करता है, वो भी फेल हो जाता है.
So please AMR पे focus करिए. This is a need of the hour. It is estimated that this will be a cause bigger than cancer of mortality by 2050. 10 मिलियन कहा जाता है जो कैंसर से होंगे तो 8 मिलियन होंगे. जीडीपी को 6% तक अफेक्ट करेगा. इंडिया की जीडीपी को कहते हैं 8% भी अफेक्ट करेगा. हमारा लार्ज नेशन है. वी यूज लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स. इसकी देयर आर मेनी डायमेंशन, एनिमल डायमेंशन, एनवायरनमेंट, वेटरनरी, ऑल दैट. लेट्स डू आवर जॉब. और वो हम अस्पतालों में जो करते हैं, आईसीयूज में करते हैं, सिक पेशेंट्स में करते हैं. मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक मूवमेंट किया जाए. एकेडमी है ना, आप सच्चाई को आगे लाइए, रास्ता खोलिए. ये एक अच्छा कॉज होगा. My fourth request to you is that although we have made advances in digital health mission in significant ways, in telemedicine and registries, but our progress for electronic health records has been modest. Now we need that so that we are really also doing the hard part of our digital health mission. वो आसान है, लिस्टें बना लो, लेकिन EHR की movement अभी slow है. And their concern is EHR में क्या होगा. ठीक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए. अगर मैं पेशेंट डिटेल ही अच्छी तरह से नहीं लिखूंगा तो क्या वो EHR है. तो माई रिक्वेस्ट टू यू इज, वी आर एट दी very nascent stage of EHR in our country. Please let's focus on this very important pillar, and perhaps eventually one of the most important pillars for digital health in India, that we start working in this direction, help each other, create the system, create the buzz, create capacity, and move in the direction of EHR. उसकी और इसलिए भी ज़रूरत है अब, क्योंकि अब जब AI driven solutions आएंगे और इंडिया ने अगर AI driven solutions बनाने हैं तो जो clinical decision making वाला space है उसमें EHR हमें ज़रूरी है. वो डेटा नहीं है तो कैसे बनेगा. इसलिए please we may lose the battle for AI in healthcare. There can be other dimensions, उनकी नहीं मैं चर्चा कर रहा हूँ, but when it talks about clinical decision making, clinical predictions and so on, and using the AI layer, otherwise it will be a a poorly knowledgeable AI giving a poor AI product. And India से product अगर quality के नहीं आएंगे तो विकसित भारत कैसे बनेगा. And my last request is that please create a culture of organ donation in your respective hospitals. There are many causes. Let me say, I want to stand today and plead for this cause. We need 1.8 lakh kidney transplants and only 15,000 happen. We need 30 to 40,000 liver transplant and 2,000 happen every year. It's picking up. In recent times, the government has opened a new pledging portal. It will help. There are domicile issues. You can now register for donation in any state. Domicile निकाल दिया गया, age हटा दिया गया है. I'm happy to inform you, we have created a manual for hospital leaders and directors of the institutions. ये web पे है already. It's called Organ Transplant Manual, which has all the things that you require to run a program in your institution. Earlier, law के लिए आप कहीं देखते थे, प्रोविजन के लिए कहीं और देखते थे, सोटो कहीं और इन्फॉर्म करता है. अब उसको सारा एक जगह पे ला गया है. अगर आप वेबसाइट पे जाओगे नोटो के, आपको मिल जाएगा. अगर दो बातें हैं इसमें, वन इज कैपेबिलिटी, one is to create the ecosystem where organ transplant coordinators are there, and there's a culture of organ transplant. Hospitals do not have culture of organ transplant, particularly in the public sector. जो भी हो रहा है ज़्यादा प्राइवेट में हो रहा है, 70-80%. एक कल्चर पैदा करो सभी जगह पे. उस कल्चर में फिर पता होना चाहिए मेरा रोल क्या है, एमएस ने क्या करना है, नर्सिंग ने क्या करना है, न्यूरो सर्जरी ने क्या करना है, कोऑर्डिनेटर ने क्या करना है, कहाँ से किसने आना है, सोटो कहाँ है, किसको इन्फॉर्म करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, बॉक्स क्या है. ये जो प्रैक्टिकल बात है, मोटिवेट कैसे करते हैं, उसका हैंडल कैसे किया जाता है. तो अब एक जगह पे है, पहले भी था, अब एक जगह पे कोशिश करी है उसको लाने की. बट ऑन वन हैंड, आफ्टर हैविंग created and attempting to create an ecosystem, then you need two things. One, people who are capable of doing organ transplantation. And kidney is not a rocket science transplantation, and yet it doesn't happen often. There are big hospitals in this city which are not doing in the public sector, for example. But the second part is, you can at least become organ retrieval center for deceased
ऑर्गन्स। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए। अब रिट्रीवल की तो दे दीजिए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और ले जाया जा सकता है। इतनी सेवा शुरुआत में कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्विस भी करें तो रिट्रीवल वाला तो एसओपी तक चलाना ही है। सो शॉर्ट पॉइंट, कैन वी थिंक अबाउट giving a big push to organ transplantation culture in our hospitals and build the systems and the SOPs and buzz, followed by create your teams for organ transplantation wherever we are, but while doing so, at least can we begin with deceased organ donation as retrieval centers, so that if you retrieve, it can be transplanted, the organs can be transplanted elsewhere. So these are my 6 asks, one on HR, one on emergency medicine, emergency departments, AMR, digital health and EHR, and lastly on organ transplantation. Happy to have this conversation with you. Thank you for the opportunity. Jai Hind. Ladies and gentlemen, please join us in giving a warm welcome to the chief guest of the function today, Honorable Minister for Road, Transport and Highways, Government of India, Shri Nitin Gadkari. Welcome, sir. I now request Dr. Yashpal Sharma, President, Academy of Hospital Administration, India, and Dr. Jitendra Sharma, Managing Director and CEO of AMTZ, to felicitate our chief guest. Welcome, sir. Thank you for sparing your time for us, sir. May I request Dr. Jitendra now to say a few words of welcome. Ladies and gentlemen, members of family of hospital administration from the country, bhaiyon aur behnon, welcome to this evening, and our very special welcome to Honorable Union Minister, Road Transport and Highways, Mr. Nitin Gadkari ji. Sir, thank you for being here with us today. Sir, there is a long profile of yours, including several D.Lits, doctorates that I can say, लेकिन मैं आपके सत्कार में एक ही बात बताना चाहूँगा कि आपने हम लोगों का घमंड तोड़ दिया। वो इसलिए कि ये हेल्थ केयर समुदाय जो बैठा है, हम लोग सोचते थे कि जान सिर्फ हम लोग ही बचा सकते हैं, लेकिन सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों को निकालकर आपने यह सिद्ध कर दिया कि जान हर कोई बचा सकता है। सर, ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लाखों बेड्स के प्रतिनिधि आज यहां आए हैं, और ये प्रतिनिधि एकेडमी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी अस्पताल प्रशासन की संस्था है, उसके छत्र छाया में आए हैं। जनरल एस.के. विश्वास जो इस एकेडमी के फाउंडर हैं, स्वर्गीय डॉक्टर एन सफाया जो इस एकेडमी के फाउंडर हैं। ये एकेडमी एक छोटी सी ऑफिस एम्स रोड पर शुरू हुई थी 40 साल पहले, और कुल मिलाकर इस एकेडमी ने 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स इस देश को दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सर, हमारे साथ मंच पर लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत जी, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और हेल्थ केयर में क्वालिटी का गुरु माना जाता है इनको,
डॉक्टर अनिल कोतवाल नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर से, डॉक्टर यशपाल शर्मा इस एकेडमी के प्रेसिडेंट, और डॉक्टर श्यामा, डॉक्टर पवन कपूर, डॉक्टर नागपाल, ऐसे कई यहां दिग्गज लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन को एक नई दिशा दी। सर, आपके आने से पहले एक सेशन चल रहा था जिसमें डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर विनोद पॉल भी थे यहां, कि इंडिया में 1000 लोगों के लिए सिर्फ 1.4 बेड है, 1.4 बेड 1000 लोगों के लिए। कुल मिलाकर 18 लाख बेड्स हैं 140 करोड़ जनता के लिए, जबकि WHO के हिसाब से देखा जाए तो हमें 3 से 4 बेड या 5 बेड मिनिमम 1000 लोगों के लिए चाहिए। इसका मतलब है हमें 18 लाख से 50 लाख बेड तक पहुंचना है, तभी कुछ किया जा सकता है। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि नागपुर में भी कोविड के समय माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से फ्रंट एंड पर लोगों की जान बचाई, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मुहैया कराए, उस तरह की लीडरशिप रीजनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर हमें देखने को वैसे नहीं मिलती है। लेकिन इन 50 लाख बेड तक पहुंचने के लिए सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आना जरूरी है। जब तक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक इस 50 लाख बेड तक पहुंचने का सिलसिला कायम नहीं हो सकता है। और एक अस्पताल को चलाने में सबसे ज्यादा कॉस्टली मेडिकल इक्विपमेंट का रोल होता है। सर, आप AMTZ आ चुके हैं, आपने देखा है कि कैसे हम MRI, CT स्कैन, हार्ट वाल्व्स बाहर के देशों को, अपने देश को दे रहे हैं। हम लोगों ने एक नया प्रस्ताव भी रखा है कि अगर कोई भी प्राइवेट एंटिटी एकेडमी के थ्रू नए अस्पताल को बनाने में आती है तो उनको इक्विपमेंट के पैसे के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 0 डाउन पेमेंट पे सारे इक्विपमेंट देंगे और उनको 1000 रुपए पर बेड पर डे चार्ज करेंगे, जिससे कि अपने प्रॉफिट से वो इक्विपमेंट का खर्च निकाल सकें और लीज पे भी बिल्डिंग लेकर हॉस्पिटल चला सकें। सर, ये पूरा महोत्सव मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन को गांव-गांव तक और समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से रखा गया है, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे बीच हैं, क्योंकि आपका विजन, आपके काम करने का तरीका, आपके लोगों को साथ लेकर चलने की शक्ति, आपके लोगों के मन में आपके लिए सम्मान, और सबसे बड़ी बात प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ लेकर चलने का हुनर, ये जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट में देश बदल रहा है, हम चाहेंगे कि आपके मार्गदर्शन से मेडिकल सुविधा भी आपके इस मार्गदर्शन से बदले, और इस बदलाव में ये पूरा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का नेशनल फैमिली आपके साथ है और आपके पीछे है, आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। सर, मैं मैडम से कहूंगा कि आपको आमंत्रित करें, उसके बाद हम लोगों का ये सौभाग्य होगा कि हम लोग आपके विचारों को सुन सकें। थैंक यू। धन्यवाद। श्री हरिवंश राय जी की एक बड़ी सुंदर कविता है, पथ की पहचान, और अपने माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान में मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगी। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग उस पर छोड़ पैरों की निशानी, जिन्होंने अपने पैरों की निशानी देश की अनगिनत राहों पर छोड़ी है। आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी के संबंध में कुछ पंक्तियां मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। Shri Nitin Jairam Gadkari, Honorable Minister of Road Transport and Highways, Government of India, completed his post-graduation in commerce, besides studying law and obtaining a diploma in business management. He formally entered politics in 1980 and became BJP's Maharashtra State President in 2005 and National President in 2009 at the young age of 52. He believes that politics is an instrument to bring socio-economic reform in society, and true to his word, Lok Hitay
Mam Karaniyam, he is transforming the socio-economic landscape of the nation at a rapid pace. Under his supervision, more than 70,000 kilometers of national highways have been constructed in the past 7 years. 27 world-class access-controlled greenfield expressway projects are under construction, with an aim to promote connectivity in rural and remote areas. Mr. Gadkari is committed to the development of qualitative, time-bound, cost-effective, and sustainable world-class infrastructure in the country. The new fast-track policy introduced by him is saving both time and fuel for commuters at toll plazas. His birthplace, Nagpur, is the first city to explore alternative biofuels for transport, including bio-CNG. With his focus on sustainability, we are fortunate indeed to welcome him as our chief guest at SASH 2023. I now invite him to deliver his address. Dr. Yashpal Sharma ji, President, Academy of Hospital Administration. मेरे मित्र हैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, MD and CEO for Andhra Pradesh Technical Zone, Medical Technical Zone. Dr. Shyama, आदरणीय मेजर जनरल कोतवाल जी, आदरणीय दलजीत सिंह जी, ज्ञानी जी और उपस्थित भाइयों और बहनों, सेफ और सस्टेनेबल हॉस्पिटल्स में जो आप लोग सोच रहे हैं उसमें मेडिकल साइंस से मेरा ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, तो मैं इससे अधिकारवाणी से कुछ बोल नहीं पाऊँगा। वैसे मुझे 7 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है, पर उसकी 4 एग्रीकल्चर साइंस के साथ है और 3 रोड के साथ है, रोड इंजीनियरिंग के साथ। सबसे पहले मैं मेरे अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपको बताऊंगा। एक बात ऐसी है कि हर काम के लिए हर व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, और हर व्यक्ति के लिए एक काम चाहिए। यानी डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रेशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनेंशियल ऑडिट से ज़्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी बात, जिस आदमी को जिसमें समझता है उसी में काम करें। मैं मजाक में कह रहा था कि डॉक्टर का काम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, और बहुत से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम यही कि जो डीन बनते हैं वो मेडिकल का काम कम करते हैं, उनको बाकी के काम ज़्यादा करने पड़ते हैं जिसके साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। सबसे पहले ऐसा है कि ये आयुष्य योजना के कारण 10 करोड़ फैमिली कवर करने का भारत सरकार ने तय किया है। तो कोई भी प्रोजेक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, और मैं इसमें विशेष रूप से मेरे अनुभव से कुछ चीज़ें आपको बता सकूंगा। मैं जब महाराष्ट्र में 95-2000 में मंत्री था तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई बनाए थे। तो उस समय धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने मुंबई पुणे के लिए कोट किया था और उनका 3600 करोड़ रुपए कॉस्ट आई थी, जो आज के 40,000 करोड़ है। और मैंने वो टेंडर रिजेक्ट किया। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और मैंने अपनी एक कॉरपोरेशन तैयार की, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और कॉरपोरेशन के द्वारा ये काम, तीनों काम हमने किए। हमारे पास केवल 5 करोड़ रुपए थे, पैसे भी नहीं थे, और ये पूरे पैसे कैपिटल मार्केट से खड़े हुए, तीनों प्रोजेक्ट पूरे हुए, पैसे तो फिट गए। अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे हाईवे को मोनेटाइज किया तो 10,000 करोड़ रुपए मिले। तो पहली बात तो मैं बिल्कुल साफ बताता हूं कि मेडिकल हॉस्पिटल्स ये इकोनॉमिकली वायबल है, और इकोनॉमिक वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी कम करना होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स में कम करना होगा।
सैलरीज में तो आजकल फिक्स सैलरी होती तो उतनी देनी पड़ती है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अभी मैं बड़ा इसके कारण नारा, एक बहुत देश के प्रसिद्ध कॉन्ट्रैक्टर ने नागपुर में एम्स बनाया। तो आप कभी जाइए, बड़ी अच्छी केस है। एक तरफ एम्स हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ आईआईएम है। आईआईएम के बारे में मैंने एक काम किया था कि आईआईएम की जो कमिटी बनाई, उसके टेक महिंद्रा के मिस्टर गुरनानी को चेयरमैन बनाया और मैंने प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बोला कि ये आईआईएम आपको डेवलप करना है। दिल्ली का आर्किटेक्ट था और एम्स के लिए जो काम था वो मेडिकल डिपार्टमेंट ने किया, कॉन्ट्रैक्टर एक ही था। और दोनों बिल्डिंग में जाकर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है, क्वालिटी से लेकर प्लानिंग तक आप आंखों से देख सकते हो। अब राष्ट्रपति महोदय ने जब आईआईएम का उद्घाटन किया तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी देश के सभी आईआईएम वालों को वहां भेजते हैं देखने के लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वन पर्सन स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जर्मनी क्यों सक्सेसफुल हुई कि आफ्टर मिनिमम मैट्रिकुलेट या 12th की परीक्षा देने के बाद एक आदमी 6 साल स्कूटर मैकेनिक का ही कोर्स करता है। हमारे देश में एमएससी बॉटनी और जियोलॉजी होने के बाद वो रिजर्व बैंक में नोटा गिनने का काम करता है। तो प्रॉब्लम यह है कि वन पर्सन स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट, इससे जर्मनी में वर्ल्ड में 4% उनका एक्सपोर्ट है और क्वालिटी के बारे में कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो सबसे पहली बात, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी तैयार की थी। और अभी इस विषय में थोड़ा सा अब इसलिए करके मैं हर साल 5 लाख करोड़ के काम करता हूँ और प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे करता हूँ और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मैं ऐसे लाखों करोड़ बात करता हूँ, मैं मीडिया को बोलता हूँ रिकॉर्ड कर लो, नहीं हुआ तो मुझे पूछना, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए हॉस्पिटल में भी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, आईआरआर अच्छा है। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो हॉस्पिटल बनाते समय लैंड कॉस्ट आपको कम से कम रहे, और जब आप बनाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का उपयोग करिए। जैसे शादी होती है तो कभी कभी घोड़ा बग्गी आती है, वो लेट आता है, बैंड वाला पहुंचता है तो वो नहीं पहुंचता, ये पहुंचता तो वो नहीं पहुंचता। पीएमसी का मतलब ऐसा है कि एक ही एजेंसी को सब काम मिले, प्लानिंग से लेकर सुपरविजन तक। अभी रोड में हमने ये किया है। और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अगर बनाएंगे तो अच्छा आर्किटेक्ट एक डिजाइन के लिए वो लेंगे, सुपरविजन वाले लेंगे, सब बातों के लिए करेंगे। गैस का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, सोलर पावर, वेस्ट का डिस्पोजल, सब प्लानिंग करके देंगे। तो पहली बात तो ये मेडिकल हॉस्पिटल्स और इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर सक्सेसफुल करनी है तो ये हमारे पॉलिटिक्स में एक व्याख्या है, सबने मिलकर काम करना। इसका मतलब किसी ने काम नहीं करना। हम सब एक है, इसका मतलब एक दूसरे के पैर खींचना। तो तुम ये डॉक्टर ने बिल्डिंग का काम करना, मुझे माफ करिए, मैं कोई आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। आप अगर हार्ट सर्जन है तो हार्ट का काम करिए, आप बिल्डिंग बनाने का क्यों करते हो? जो शेप होता है वो शेप, उसको 15 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है, उसकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है। बाल काटने वाले की भी क्वालिटी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बड़ी डिग्री लेता है और सरकार में बड़ा अफसर बन जाते हैं, उनको सबको ये लगता है कि हमने आईएएस ऑफिसर हो गए, हम सबसे, तो हम सब बातों के एक्सपर्ट है। वी आर द सॉल्यूशन फॉर ऑल क्वेश्चंस। ये सबसे पहले गलत बात है। आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, दवाई की बात करो। अब टॉयलेट की पाइपलाइन कैसी होनी चाहिए और इन सॉफ्टवेयर का ये डिजाइन कैसा, ये इसमें लफड़े में मत पड़ो। पर जनरली विद्वान लोगों की ये कमी रहती है कि वो मन में मन यही समझते कि आई एम परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। आप उनमें से नहीं है। तो ये मेहरबानी करके जो एक्सपर्ट है उसी की सलाह से बनाओ। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, इसका फायदा मैं आपको मेरी उदाहरण बताता हूँ कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को हमने 10 पैकेजेस में डाल दिया और एक्सप्लोजिव लाइसेंस से लेकर प्लांटेशन करने तक
रोड डिजाइनिंग से लेकर क्वालिटी तक एवरीथिंग उसमें डाल दी, पीएमसी। और कंडीशन ने डाली, उस समय हमारे यहाँ उतना इंजीनियरिंग डेवलप नहीं हुआ था, कि फॉरेन पीएमसी विथ इंडियन पार्टनर। और उस समय बड़े बड़े एजेंसीज आई, बाहर की आई, और उन्हें जॉइंट वेंचर करके टेंडर भरे, और हमने टोटल कॉस्ट पैकेज के 3.2% उनको दिए पूरे काम के लिए। टेंडर भी वही निकालते थे, एवरीथिंग उनको दिया। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि हमारे कामों में इतना सस्ता हुआ कि जो धीरूभाई अंबानी ने 3600 करोड़ कोट किए थे, जो आज के 40,000 करोड़ है, वो काम हमने 1600 करोड़ में पूरा किया। 2000 करोड़ में 20,000 करोड़ बच गए। और आपको कभी मौका मिला मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देखने का, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं। अभी 25-30 साल हुए, गड्ढा नहीं पड़ता, टनल्स भी अच्छी बनी है। दूसरी बात यह है कि पीएमसी के कारण छोटे मोटे सब काम उसको दे दिए। और इसलिए पहली बात तो ये डिजाइनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन की सुपरवाइज करने तक आप पहले पीएमसी को अपॉइंट करिए, मेरा आपसे सुझाव है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्टर के टेक्निकल एंड फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसमें इक्विलिब्रियम ऐसा मेंटेन करना चाहिए कि समझो आपकी बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट 50 करोड़ की है, तो रियल इस्टेट में 50 करोड़ की बिल्डिंग जिसने एक काम किया है उसको क्वालिफाई करिए। अब एक प्रॉब्लम होता है कि एक बिल्डिंग अगर 25 फ्लोर की है, तो ये बहुत सिंपल बात है कि जो आदमी 10 फ्लोर बना सकता है वो 15 बनाएगा, वो केवल ऊपर ही जाना है, इक्विपमेंट नहीं खरीदना है। तो हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ करप्शन ज़्यादा कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐसी ऐसी कंडीशन डाली जाती है कि 80% लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और फिर वो 20% होते हैं, वो होटल में रात को बैठ के मीटिंग करके कार्टेल बना के टेंडर भर देते हैं। तो पहली बात, टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन का ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ, ये आपको तय करना होगा। और उसी पॉइंट पर अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट किया तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। और ये संभव है। मैं लाखों करोड़ के काम करता हूँ, और मैंने ये जब पॉलिसी, कुछ समय मेरी गलती भी हुई। एक समय पेंडुलम ऐसा था कि पूरे इतनी रिजिड थी क्वालिफिकेशंस कि 4-5 टेंडर आते थे। अब फिर जब मैं मंत्री बना, तो मैं आपको इसलिए ये केस बना रहा हूँ, ये आपके फायदे की, आपके काम की है। तो 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बन पड़े थे, स्टॉल प्रोजेक्ट थे। और फिर उसका कारण रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो एक्विजिशन नहीं हुआ, एक्विजिशन हुआ तो रेलवे का आरओबी क्लियर नहीं हुआ, रेलवे का आरओबी क्लियर होगा तो इन्वायरमेंट का लाइसेंस नहीं मिला, एनवायरमेंट का हुआ तो कोर्ट ने स्टे दे दिया। तो 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे। मैंने और मेरे डिपार्टमेंट ने भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। हमने सोल्यूशन निकाले, अकाउंट रिप्लेसमेंट किए, कॉन्ट्रैक्टर कुछ टर्मिनेट किए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। मैं सुबह 10 से लेकर रात को 12 बजे तक एक हॉल बनाया था, सबको बुलाता था, ओपन चर्चा होती थी, निर्णय होते थे और प्रॉब्लम सॉल्व हुए। तो पहली बात तो सबसे पहले कोई भी टेंडर निकालने के पहले जितनी परमिशन लेनी है उतनी ले लो। समझो आपने बिल्डिंग का काम करता है, तो हमारे देश में कोई काम करो करके बोलता है नहीं, काम बंद करो। जो आता है वो बोलता है पहले काम बंद करो। तो आप जितनी परमिशन लगती है उतनी पूरी आप ले लो। अब इसमें रोड में हमने पहले बनाया था देश का पहला बीओटी प्रोजेक्ट, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मैंने बनाया था, ठाणे भिवंडी बाईपास। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये कैसा बीओटी शुरू हुआ, जो आज देश में लाखों करोड़ बन रहे। तो मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना, तो मैं जहाँ रहता था रॉकी हिल करके, मलबार हिल पर जगह थी, तो 19 हाईकोर्ट जज रहते थे और मैं अकेला मंत्री था, मुझे केवल फ्लैट मिला था। तो मैं बना, तो मैंने कहा फर्नीचर बना मेरे घर पर, ये बना, तो मैंने कहा मेरे को ये टीवी चाहिए। तो उसने कहा कि टीवी नियम में नहीं बैठता। तो मैंने कहा ये हाईकोर्ट जजेस के घर में कैसे टीवी लगा के दिया तुमने? बोले साहब उनके सामने बोल नहीं सकते इसलिए लगा दिया। पर नियम ऐसा है, आप बोलो तो आपको भी लगा देंगे। लो नियम में बट्टा तो मत लगाओ। तो मैं मलबार हिल पर एक दुकान में गया और मैंने उसको कहा कि ये मुझे टीवी खरीदना है। तो उसने कहा अच्छा है वगैरह, भाव हो गया, तय हो गया।
बाद में उसको पता चला कि मैं मंत्री हूँ, तो मैं इंस्टॉलमेंट पर टीवी लेने वाला था। तो उसने कहा साहब ये अभी पीस नया नहीं है, मैं नया पीस आने के बाद आपके पास भेजूंगा। तो उसको बाद में उसका नया पीस कभी आया ही नहीं और मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि वो लगा कि मंत्री अगर इंस्टॉलमेंट पर टीवी लेके जाएगा तो पैसे मिलने की गारंटी क्या है। तब मैं सोच रहा था कि अगर टीवी अगर इंस्टॉलमेंट पे मिलता है तो टनल, रोड और ब्रिजेस क्यों नहीं बन सकते। और इसी मॉडल पर मैंने पहले बीओटी शुरू किया और अब इतने प्रोजेक्ट हुए कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। फिर जब मैं भारत सरकार में मंत्री बना 2014 में, तो पूरे हालत खराब थी सेक्टर की। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम लेकर मैं बता नहीं सकता, वो लगभग दिवाला पिटने की स्थिति में। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना। तो मैंने एक दिन बैठकर कहा कि एक मेरे साथ एक अरुण नरेंद्रनाथ करके एक आईआईटी इंजीनियर था, वर्ल्ड बैंक में गया, अभी वो तामिलन था, बड़ा होशियार था। तो बोला अरुण इसका उपाय क्या है। बोले, मैंने बोला हम सब्सिडी नहीं दे सकते कुछ। बोले दे सकते हैं। तो एक नया मॉडल तैयार हुआ, हाइब्रिड एन्युटी। 40% सरकार देगी और 60% इन्वेस्टर लाएगा। फिर उसके बाद हमने इनविट बनाया। अभी इनविट बनाने के बाद अभी हमने इनविट बेचे। तो मैं अभी हमारे इनविट का मैंने बॉन्ड इशू मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया। तो 7 दिन का टाइम था। तो मुझे विश्वास था, पर हमारे अधिकारियों को लगता था पैसे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं जब उस समय मुंबई में मंत्री था तो 500 करोड़ रुपए के लिए बॉन्ड इशू में गया था, मुझे 1200 करोड़ मिले। 600 में गया, 1150 करोड़ मिले। तो मुझे रतन टाटा और धीरू भाई कहते थे, अंबानी जी, कि भाई तुम तो हमसे भी होशियार निकल के तुमको पैसा मिल गया। तो मुझे मालूम था मिलेगा, पर अधिकारियों को विश्वास नहीं था। तो 7 दिन का टाइम था, हमने बॉन्ड इश्यू चालू कर दिया और 7वें दिन आकर मैं वो घंटी बजाकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्लोज करने वाला था। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो मुझे फाइनेंस मेंबर का फोन आया कि कहीं से भी जल्दी मुंबई आओ और इसको बंद करो, नहीं तो ये पैसा वापस कैसे करना, ये प्रॉब्लम आएगा। जो 7 दिन में पैसे चाहिए वो 7 घंटे में मिल गए। तो मैं आपको कहता हूं देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं एक ही रोड 1 लाख करोड़ का बन रहा हूं, दिल्ली मुंबई, मेरे को कोई पैसे की कमी नहीं। मैं ऐसे 26 रोड बना रहा हूं। तो पहली बात, इफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज गुड, इकोनॉमिक वायबिलिटी इज देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इक्विटी और रिसोर्सेस, तो पैसा मिलेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि आपको एक अच्छी बात बता दूं। ये जब नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे तो मैंने ये पीओटी का प्रोजेक्ट तैयार करके दिया था कि अनेक राज्य सरकार के पास हॉस्पिटल पड़े हैं, जगह पड़ी है, डेड एसेट्स है, कोई दवाई है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवाई नहीं, दोनों है तो कौन जाए मरने के लिए, ऐसी दवाखानों की हालत है। तो मैंने उनको कहा इसको बीओटी में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने कहा लैंड और बिल्डिंग, इसमें इनको कहो कि 30 साल के लिए 1 रुपये लीज पे देते हैं, बाकी तुम डेवलप करो। अब आप, मुझे थोड़ा बहुत समझता है कि हॉस्पिटल चलाना फायदे में नहीं है, मेडिकल कॉलेज चलाना फायदे में है। हॉस्पिटल इज लॉस मेकिंग, सो हॉस्पिटल विथ मेडिकल कॉलेज बहुत प्रॉफिटेबल है, और मेडिकल कॉलेज विथ पैरामेडिकल कोर्सेस और भी प्रॉफिटेबल है। फुकट में लोगों का यूज होता है। जो ट्रेनिंग होते हैं ना, एमबीबीएस होने के बाद 2 साल की इंटर्नशिप, वो कम पैसे में मिल जाते हैं। जो जितने एक्सरे उसके टेक्नीशियंस होंगे उनको 2 साल वो भी फुकट में मिल जाते हैं, कम पैसे में। तो वैसे भी काम निप जाता है, तो सैलरी देने की जरूरत नहीं। तो पहली बात, मिनिमम 400 बेड के ऊपर का हॉस्पिटल डालो कि उसे मेडिकल काउंसिल मान्यता नहीं देती, और उसके साथ मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेस और मेडिकल कॉलेज डालो तो हॉस्पिटल फायदे में होगा। आपको एक अच्छी बात बताता हूं, सब बातों में इकोनॉमिक वायबिलिटी है। ये मथुरा में, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो मथुरा की 90 mld स्लज, गंदा पानी, तो मैंने देखा वो सुएज वाटर था, तो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी। तो उस समय मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब थे, उनको बुलाया। मैंने बोला आप उत्तर प्रदेश सरकार को पैसे कितने देते हो हर साल पानी के लिए? बोले 25 करोड़। मैंने बोला आपको 20 करोड़ में पानी देता हूँ, लेंगे? बोले लूंगा। तो मैंने एक हाइब्रिड एन्युटी में मॉडल निकाला कि 40% ग्रांट इन एड गिवन बाय गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर
और 90 mld स्लज को पानी करके अच्छा करके वो रिफाइनरी को देगा, और रिफाइनरी 20 करोड़ पर ईयर इंडियन ऑयल कॉन्ट्रैक्टर को देगी। टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी आई, उनने लिया, अब प्रोजेक्ट चालू हो गया। और जो गंदा पानी था वो जो 100 रुपए का प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल वो 40 रुपए में हो गया। यानी कचरे से भी, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टू इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी। वन इज नॉलेज टू वेल्थ, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और second ये है कि no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. तो अभी हमने ये दिल्ली में UR2 करके रिंग रोड बनाया 8,000 करोड़ का, तो ये गाजीपुर की टेकड़ी है, उसका पूरा कचरा 30 लाख टन रोड में डाल दिया, फिर मुंबई पुणे हाईवे में डाल दिया, अब अहमदाबाद डोलेरो में डाल दिया। कल परसों में बंगलोर था, तो बंगलोर में प्रॉब्लम है, फ्लैश नहीं मिल रही दिल्ली चेन्नई बेंगलोर हाईवे के लिए। तो मैंने कहा ये कारपोरेशन के कचरे को सेग्रीगेट करो और डलवा दो, ताकि स्वच्छ भारत अभियान भी हो जाएगा और फुकट में मिल जाएगा। अब एक कचरा हम लेने लगे, इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसमें। तो ये जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर सक्सेसफुल है, तो मेडिकल में क्यों नहीं हो सकती? 4 बेड चाहिए और एक ही बेड है। और मैं थोड़ा, मुझे आप नाराज मत होना, पर मैं एज ए सिटीजन करके बोल रहा हूँ, जिस दिन हॉस्पिटल ज़्यादा खुलेंगे उस दिन डॉक्टर पैसे कम लेंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगी, मोर कंपटीशन मोर रीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर। मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर को बोला ये ऐसा कंपटीशन हो कि एक दूसरे के कपड़े फाड़े। आप देखो हवाई जहाज आ गए, और कंपनियां खुलनी चाहिए, सरकार ने और प्रयास करना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति आए कि एयरपोर्ट के बाहर लाल पीले कपड़े पहनकर जाना है क्या मुंबई, 5,000, दूसरा 4,000, तीसरा 3,000। अब मैं बताता हूँ टेंस का भाव क्या था, अब कितना हो गया। हार्ट का बाईपास सर्जरी की कीमत कितनी थी, अब कितनी हो गई। मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मेरा रूम मेडिकल वार्ड था, क्योंकि हार्ट के ऑपरेशन मुंबई में होते थे, नागपुर में नहीं थे। अब क्या हुआ, हमारे नागपुर में भी 60-70 हॉस्पिटल्स हो गए, और हॉस्पिटल इतने ज्यादा हो गए, कैपेसिटी बढ़ गई, कैथ लैब सबके पास आ गई, रेट कम हो गए। तो रेट कम करना होगा तो ये डिमांड एंड सप्लाई में डॉक्टर की भी संख्या बढ़ाओ। अब देश में और एक 10 लाख डॉक्टर हो जाएंगे, तो जैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की अवस्था हुई थी प्राइवेट, अब वो बंद पड़े क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई। वैसे मेडिकल कॉलेज इतने खोल दो कि फी कम हो जाए, डोनेशन तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। जो सरकारी आयुष्य में योजना है उसमें वायबिलिटी है। अब एमडी की एडमिशन मैं नहीं बोलना चाहता कितना पैसा लेते थे, आई डोंट टॉक एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग अबाउट मेडिकल काउंसिल, और डोनेशन कैसा लेते थे, कितना लेते थे, नंबर 1 नंबर 2 मुझे नहीं जाना है उसमें। पर ये क्यों होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। तो मोर हॉस्पिटल्स विथ इकोनॉमिक वायबिलिटी ये बहुत आवश्यक है। और जो अभी वर्ल्ड में चर्चा हो रही है हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, उसमें मेजोरिटी जो है 2 इश्यूज है, हेल्थ एंड एजुकेशन। अब एजुकेशन में 1200 यूनिवर्सिटीज हो गई, और हर यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के लड़के पढ़ने के लिए विदेश में जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपको पता है कि ये यूक्रेन में और रशिया में कितने डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, फंस जाते हैं वहाँ, डोनेशन खर्चा करते हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वही चलाए गवर्नमेंट रेट पर, और उसी जगह का उपयोग करके उनकी कैपिटल कॉस्ट कम लगेगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी बढ़ेगी, और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, तो ये यूक्रेन और रशिया क्यों जाएंगे। जहाँ तक एग्जामिनेशन है वो तो एक ही है, उसमें डिटोरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल इंडस्ट्री है। मैं कभी कभी बिना अनुदान पर एजुकेशन को बोल रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। और मैं जो कुछ रोड सेक्टर में, टनल्स, ब्रिजेस में अनुभव कर चुका हूँ, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट इसमें भी
आपकी इकोनॉमिक वायबिलिटी IRR अच्छा है और देयर इज ह्यूज पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर मेकिंग फ्यूचर के लिए अच्छे डॉक्टर्स, और इक्विपमेंट भी है और हर चीज़ में नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मैं शर्मा जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो वेंटिलेटर दिए, मैंने 500 वेंटिलेटर इनसे लिए और डोनेट किए लोगों को कोविड के समय में, तो इन्होंने मुझे 47 या 49,000 में एक वेंटिलेटर दिया और मार्केट में कितना है, 5 लाख और 7 लाख रुपए का। अच्छा, एक भी वेंटिलेटर की तकरार नहीं आई, एक भी कंप्लेंट नहीं आई। तो ये फॉरेन से क्यों लाते हो? पलंग बनाने के लिए यहाँ कितने अच्छे पलंग बन रहे हैं, तो यहाँ बनाने वाले 10 मैन्युफैक्चरर तैयार होंगे, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी कम होगी। और दवाई पे भी बोला, मुझे एक ने बताया था कि एक बात गडकरी जी आप ध्यान में रखो, किसी को प्रोडक्शन कॉस्ट मत पूछो, किसी फिल्म अभिनेत्री को उसकी उम्र मत पूछो, और किसी अखबार वाले को उसका सर्कुलेशन मत पूछो, और किसी डॉक्टर को, एक डॉक्टर मेरे पास आए थे, मैं कूलर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, बोले नितिन ये कूलर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? मैंने डॉक्टर ये क्यों पूछ रहा हूँ? अगर मैं आपको पूछूं कि आपके जब दवाई के बाद जो फी लगाते हैं उसकी कॉस्ट क्या है, आप हाथ लगाते हैं और बोलते 2,000 रुपये फी दो, कितना कॉस्ट कहाँ से आई? आई अंडरस्टैंड कि ये कॉस्ट नॉलेज की होती है, एक्सपीरियंस की होती है, और इसलिए नेचुरली वो देनी पड़ेगी, पर ऐसे 10 लोग तैयार होंगे तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसलिए देयर इज ए गुड इकोनॉमिक वायबिलिटी बाय हैविंग गुड क्वालिटी हॉस्पिटल्स, जिससे देश के लिए भी फायदा होगा, और जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है इसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। और सरकार में अब सब लोग करते हैं, अभी हमारे यहाँ हार्ट के इसमें सब जगह अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में अभी कम है, तो वो और 10-20 हॉस्पिटल खुल जाएंगे तो रेट कम हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाना देश के लिए आवश्यक है, किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, और इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी, और सरकार के आज जो आयुष्य योजना में रेट है वो भी लोग ले रहे, उससे भी खुश है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से थोड़ा सा आपके मैनेजमेंट का अप्रोच बनाकर कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल को कम करना, कॉस्ट ऑफ मशीनरी को कम करना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करना, और विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी PMC बनाकर कम समय, अभी जैसे एक हॉस्पिटल बनना है 7 साल काम चल रहा है तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, और आप सब परमिशन लेके 2 साल में बनाओगे तो एकदम होगा। मैं मुंबई में था तो मैंने एक रूल लाया था, 55 फ्लाईओवर बन रहे थे तो उसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए थी उस समय के, आज की 25,000 करोड़ होगी। तो मैंने एक नियम सिंपल बनाया कि जो एक दिन पहले बनाएगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। आप ताज्जुब करोगे कि मुंबई में वो बांद्रा से एयरपोर्ट तक एक सांताक्रूज में एक बड़ा फ्लाईओवर है, तो उसका टाइम पीरियड डिपार्टमेंट ने दिया था 4.5 साल, और मैंने ये स्कीम लाई तो उसने बनाया 17 महीने में, क्योंकि बोनस मिला। तो पूरे फ्लाईओवर 1800 करोड़ के जो थे वो 950 करोड़ पे बन गया, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट कम होती ना। 17 महीने में बनाया तो मशीन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हुआ, मैन पावर का खर्चा कम हुआ। तो सम टेक्निक्स इन मैनेजमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट, और यूजिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल भी बहुत उसमें सेविंग करता है, और इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कराइए, अच्छी डिज़ाइन बनाइए, और कॉस्ट को सेविंग करते हुए विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी, अच्छी मशीनरी को लेकर, कैपिटल कॉस्ट को कम इंटरेस्ट में लेकर अगर आप करेंगे तो आपकी टोटल आपका जो बोझा है वो कम होगा, और आप कम पैसे में अच्छी सुविधा दे सकेंगे। और हिंदुस्तान में अभी तक मेरे अंदाज से कम 300 एम्स और 1000 मेडिकल कॉलेज पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे निकल सकते हैं। इतना पोटेंशियल है, इतनी इकोनॉमिक वायबिलिटी है। हमारे पास तो एक नेचुरल एक्सपर्टाइज है। मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूँ, तो मैं ये कंपनी वालों को बताता हूँ कि ऑटोमोबाइल का संख्या कोई कम नहीं होती है, 22% ग्रोथ है। हर ब्रांड की नई गाड़ी आती है, वेटिंग लिस्ट लग जाती है। और दूसरा पॉपुलेशन, दोनों बढ़ाने में पूरा एक्सपर्टाइज भारत की जनता के पास है। तो आप चिंता मत करिए
कि आपके हॉस्पिटल अच्छे चलेंगे। तो इसलिए आई एम गिविंग माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, और हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स का सपना पूरा करने के लिए हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन में काफ़ी कुछ होना चाहिए। और आप लोगों का मेरे अनुभव के आधार पर जो मुझे बताना था वो केवल मैंने आपको बताया। अगर सही लगेगा तो स्वीकार करिए, नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. We now request Dr. Yashpal Sharma and Dr. Jitendra Sharma to exchange a memorandum of understanding which has been finalized between Kalam Institute of Health Technology, Vizag, and the Academy of Hospital Administration, Noida, for conducting short-term courses on health technology assessment for healthcare professionals in India. Thank you very much. With this, we come to the end of a very, very interesting inaugural session of SASH 2023. I request all the dignitaries on the dais to take their seat amongst the audience. Thank you so much, sirs. Thank you.